Good morning, Bharti Morning. ma'am. Good morning, Sushant sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very much audible. Good morning, participants. On behalf of Indira Gandhi University, I welcome you all in the valedictory day of Faculty Development Program. So today we'll be having with us a distinguished guest, Professor K.K. Agrawal. So he will be joining us shortly. Then we will be having a technical session on Microsoft Teams and followed by the evening session on Moodle. And then in our valedictory session, Chief Minister of Haryana, Honorable Shri Manohar Lal ji will be joining us. So on behalf of Faculty Development Program team and Indira Gandhi University, I welcome you all. So we are just waiting for our guest. As he joins us, then we'll start our session. Sushant sir, Yes, ma'am. VC sir has joined us. And our distinguished guest has also joined us. So please unmute both of them. Good morning, sir. Good morning, Bharti. How are you? Good, sir. Good morning to everybody. Good morning, sir. So may we start, sir? Professor Agarwal has joined. Yes, sir. He's there. Yeah, start. So once again, good morning and welcome. I welcome you all on the behalf of Indira Gandhi University, IGU Meetpur, and the Faculty Development Program team. Sir, we are honored that you have joined us and given your precious time. Thank you, sir. So, without waiting or wasting much time, I would like to invite the faculty development program, the person who conceived the idea of a faculty development program on MOOCs and Moodle-based learning management system, our Honorable Vice Chancellor, Professor S.K. Gakharji, to formally welcome Professor K.K. Agrawal ji, Honorable Chairman, National Board of Accreditation, New Delhi, and our distinguished guest for the session. Over to you, sir, please. Thank you, Bharti. Good morning to everybody. Our very, very distinguished guest of the day, Chairman, National Board of Accreditation, Professor K.K. Agrawal. Director of this workshop, my colleague, Professor Tej Singh ji. The convener of the workshop, Dr. Ishwar Sharma. Organizing secretaries, Dr. Bharti, Dr. Sushant. Coordinators, Dr. Meera, Dr. Mamta, other colleagues, dear participants, good morning to all of you. Friends, it is a very special day in the annals of Indira Gandhi University that today we have with us the man of decade, the man of century, and finally the man of millennium. This is being declared by American Bibliography Institute, United States of America. I am talking about Delhi Rath, Chairman, National Board of Accreditation, Professor K.K. Agrawal ji. He has been a founder, vice chancellor of Guru Gobind Singh
Indraprasth University, Delhi for 10 years. He was there. It is an honor and privilege for me to welcome our distinguished guest on behalf of Indira Gandhi University family in this workshop on MOOCs and Moodle-based teaching and learning management system. I thank Professor Agarwal, Chairman NBA, for sparing his precious time for us out of his very busy schedule and for accepting our invitation. He is a towering personality. I know him since my from my when I was in a student life. However, I had an opportunity meeting him personally a few years back only. You are role model, sir, source of inspiration of many of us. We are feeling motivated and inspired by your presence. Your presence is definitely going to ignite the young minds of the faculty attending this workshop. I once again welcome you, sir. Thank you very much. Jai Hind. Over to Bharti. Thank you, sir. So it would be injustice from my side that if I don't formally introduce Professor K.K. Agrawal, sir. So just a brief introduction about sir. That Professor K.K. Agrawal, Chairman, National Board of Accreditation, is an engineer, teacher, and an IT expert. He has obtained his engineering degree from Punjab University and his master's and PhD from National Institute of Technology, Kurukshetra. He has served NIT Kurukshetra for 27 years. He has joined as Pro Vice Chancellor of Guru Jambeshwar University, Hisar, before joining Guru Gobind Singh Indraprasth University as its founding Vice Chancellor, where he has served for 10 years. He has served as President, Institute of Electronics and Telecommunication Engineers, President, Southeast Asia Regional Computer Confederation, Sectional President, Indian Science Congress Association, President, Computer Society of India. He has more than 350 publications to his credit, out of which more than 150 has been in international journals like IEEE Transactions, International Journal of Electronics, International Journal of System Science, International Journal of Computer and Electrical Engineering, and so on. He has presented his work in the reputed institutes like Defense Research Development Laboratory, Hyderabad, Vikram Sarabhai Space Research Center, Trivandrum, BHEL, Hyderabad, and the companies like Ford Motors, headquartered Detroit, Clearwater, Florida, USA, and in the foreign universities of USA, UK, Germany, Canada, Malaysia, and the list is too long to read, sir. His most notable contribution is the reliability analysis for Polar Satellite Launch Vehicle. Professor Agrawal has been declared as Man of Decade, Man of Century, and finally the Man of Millennium by American Biographical Institute, USA. He has also conferred Lifetime Achievement Award by Institute of Electronics and Telecommunication Engineers, India, Computer Society of India, and by India International Friendship Society, and Delhi Ratna by All India Conference of Intellectuals. International Biographical Center, England, has published his biography in the first 500 at the new millennium. Sir, it is indeed our great privilege and honor to have a scholarly personality and the man himself. Thanks for sparing your valuable time from your busy schedule, sir. So I invite you for your talk, sir. Are you able to hear me? Am I audible? Yes, sir. The Yes, sir. volume is a bit low, but you are audible. Okay. Thank you, Bharti, for nice words. Professor Gakhar, my friend, colleague, Vice Chancellor. Many
invited me to this faculty development program, I could not say no to him because of the long-standing friendship, number one. Number two, because I was finding in this pandemic, everybody is doing courses online. Everybody is even promoting online education, but really very few are discussing how to do it. What are the tools available? What is the infrastructure available for online education? That was being discussed very, very little. I have told this many times that I am so happy that the by and large, the faculties of this country, whether it is school or college or the university, have come to the occasion, have risen to the occasion to deliver online education at a very short notice, practically a zero notice. Lockdown was declared one fine day, and they had no idea that they will have to deliver online education. But by and large, they rose to the occasion, delivered it reasonably well. Students are reasonably satisfied with this. And otherwise, we might have to lose the session for the students, which has been saved by and large in the country by our faculties using and resorting to online education. So that my compliments to all the faculty. Please remember the numbers are not small. Worldwide, we are having 1.6 billion students outside the classrooms. 1.6 billion students. In India also, 33 crore students are outside the classrooms, whether it's school, college, or university. Now imagine if we had not found ways and means to make these 33 crore students busy, what would have happened? What would have happened when all these students were confined to the houses and they were not busy in education? So that's a great thing which has been done. We should not undermine it. But having said that, uh, see, one is to resort to a situation. You saw the fire, you had to extinguish the fire by whatever method you could do. That's what you have done. But is that the best method to do it? That's the question which always remains. Because as I said, online education by and large in this country was considered always as a cousin of a distance education, and was always considered as a sort of secondary thing. It never got the respect which it should have got. But having said that, we have now made sure that this will have to be changed. Our view towards distance education or online education has to be changed. This online education is also not really the distance education in that sense of the word. It could be very near. I mean, I am envisaging a situation where the students will be in their hostel rooms and you will be talking to them from your office. So it's not distance. They're not in a different town. They're not, but then they're just not allowed to come to the class, huddled together in a class of 60, in a class of 80. So that is the situation which has been thrust upon us. So the kind of education which we have to provide now partially has to be online, come what may. Having said that, uh, see, because there are many developed countries, Australia, for example, which always gave equal importance to online education and face-to-face education. But in our country, by and large, we were shying away from online education, and for a reason. There were several reasons. First is because we had failed to set up the quality norms and quality standards for online education. So neither we were very confident as teachers, nor students were confident, nor parents were confident, nor employers were confident. And therefore, it was always seen with a degree of skepticism, number one. Number two, we really never worked to devise ways and means for it. I'll tell you a very small example. When we go to a classroom and take a class, normally the class is 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes, 60 minutes kind of it. Because the
psychology of educational research tells us that the attention span for a student to listen to the teacher could be about 45 minutes. And therefore, we could have classes 45, 50 minutes kind of. But when it comes to online education, the same education research tells me that the attention span for the student for the online lecture could be just about 20 minutes. And therefore, are we very justified in delivering 1.5 hour lecture on online education, on online platform, which will certainly distract the student from the peak attention span. So one of the theories could be we will have to divide our lectures into micro modules of 20 minutes each, 15 to 25 minutes each, and then deliver them with suitable breaks. And so this culture will have to change. It's not a simple thing that the student has a computer or a smartphone. I also have a computer and a smartphone. Zoom is available free of cost, or Cisco WebEx is available, or Microsoft Teams is available. So let's go ahead and do that. I again repeat, you are doing it. It's creditable. We appreciate you. But that is not the best method of doing it, because we really never learned the best method. We were never exposed to the best method. So I think there's a very great necessity in the country to evolve best teaching pedagogies for online education. I mean, very fact that the connection is available is not enough to deliver online education. What should be the psychology on online education? What should be the tools and infrastructure available on online education? What should be the ideal way of doing online education? What's the best platform doing online education? So all this is yet to be researched upon. And as I told Dr. Gakkar also, to the best of my knowledge, people are using MOOCs. People are using Moodle-based learning management system. But how to effectively make use of it was never formally told. I was in the SWAYAM committee of UGC, and I know when people developed MOOCs, yes, they did their best, but it was far from ideal. I think in many cases we had to take 10 retakes before we approve the module, because teachers are not used to delivering online. So video-based lectures, online education has to be developed. And I'm very happy and I congratulate Dr. Gakkar and all his team for thinking of a topic which facilitates online education to everybody. So it's a very generic faculty development program which enables all teachers to become better online teachers irrespective of their subjects of education. So that's something which is great, and I have a lot of appreciation about it. Incidentally, I was busy today afternoon, so in an international meeting, because we have our international evaluation of National Board of Accreditation itself in the afternoon. So I'm talking to you for noon, but as it's good for you, you get an advantage, Honorable Chief Minister addressing you in the afternoon. So, and I'm happy that you get so many registrations all over the country, because I think in their heart of hearts, every teacher is feeling, yes, I'm delivering my course. I'm teaching mathematics online. I'm teaching chemistry online. I'm teaching history online. But can I do better? That's the essence of a teacher, always. So therefore, that is why I think we have got good number of registrations, because everybody wishes to learn that. Because see, when we go to online teaching, I say now, because even when the situation normalizes to some extent, I personally see for the next year at least, you are not going to have the same kind of face-to-face education which you used to have. Because even if the university is open, you will not be allowed to have 60 students in a classroom. You may not be allowed to have 30 students in a laboratory. And therefore, what do? You cannot build double the classrooms overnight. You cannot do that. Therefore, even if situation normalizes partially,
and our universities reopen, there is no chance that you will be able to come back to the previous method of teaching 100%. That is, you will be able to teach complete courses in the classroom. That will not be possible because you cannot have 60 students in the classroom. You cannot make 3 times the classrooms overnight, and you cannot make students come at 11 to 12 in the night to take a class. So therefore, in all subjects, what I see the future is every subject will have to go to a blended mode of education, whereby you will deliver part of it online and part of it face to face by staggering the class. So this requires a complete reorientation to teaching pedagogy for all our teachers in all subjects. And this will vary from subject to subject. This will vary from topic to topic. Maybe history, maybe 80% you could do online, or mathematics you may be able to do only 10% online, so on and so forth. Even in one subject, some topics may be easy to cover online. Some subjects may be not possible easily to be covered online, which you will prefer to do face to face. As science students, you will have laboratories which have to be normally done face to face. Although, let me tell you, there are good virtual laboratories available today, but still a lot of it is to be desired. So in each subject, not only subject, in each topic, in each lecture, you will have to take a decision. Can I do it online, or it will be better done face to face? Is this experiment best done online or off to off? I mean, the advantages are both sides. For example, if you're a chemistry teacher and you want to demonstrate explosion, you cannot show that in your laboratory. So face to face may be difficult, but online may be easy. To show an explosion online is very easy. If you want to show an escape velocity in physics, that if you revolve something at 7 miles per hour, it goes to the space. How do you show it in the laboratory? You cannot. You cannot really revolve at 7 miles per hour, but on the online you can do it. So there would be some situation where online would be better than offline. There would be some situations where offline will be better than online, and that decision will have to be made by each teacher, for not only for the subject, but for each topic. And that is the need. I always, whenever I am addressing the teachers of any university, I'm saying, please devote this time of lockdown to develop this breakup in my subject. What can I do online? What can I do offline? If when the students are allowed to come to the university. When they are not allowed to come to the university, you have no option but to deliver online. That you are doing, that we have. Second issue which you will have to keep in mind is, a classroom environment is an environment which we cannot create in online. See, you learn much by looking at other students. You learn much in life by sort of making a mischief once a while. You learn much in life by sort of behaving with different students in different manners at different times. All that learning will be missing in online. How do we really make up for it in online? To what extent? Or that we resort to face will have to be done. Because students' behavior is very important for his knowledge. It's not only one-way communication of knowledge. If it's only one-way communication of knowledge, all the courses by best of teachers in the world are available free of cost. The student will log into Coursera or edX or something and learn it. But the role of teacher, and I always appeal to my teacher colleagues, please do not make yourself irrelevant. If you make yourself robotic in the whole process, then you will make yourself irrelevant. The student might say, instead of listening to my teacher ABC, I'll better listen to XYZ from America. And it's all the same. Now, you have to make sure that you are not irrelevant. And I'm not saying only in that sense. I'm only saying, also saying, because student really needs interaction.
and that interaction has to be provided for. And I read a research long time back. In life, all the knowledge which we acquire, all of us, including me, Professor Gakkar and all that, only about 15 to 20% comes from normal classroom learning. 80% knowledge which we all have comes from environment, comes from interaction with others, comes from facing others. How do we make up for it in online education? Will the student be deprived of all this? If yes, will he be a successful a professional or a scientist or an engineer or manager in life? Are bigger questions which we have to answer. So, for example, when you do a course on MOOCs, I mean, best MOOCs to be developed. Uh, why should it be necessary tomorrow for me to say, well, a complete MOOC course from teacher ABC must be taken? Well, the student may decide, I'll take unit 1 from teacher ABC, unit 2 from XYZ, unit 3 from 1, 2, 3. Why not? Once these flexibilities will be available, curriculum design will be more difficult, and education is going to become very heavily student-centric examination, education. Please believe you me, not very far away, student will come to you. Yes, I want to enroll for MSc Chemistry, but sir, your university has these 18 courses. I am happy with these 14. These 4 I don't like, and I will study these 4 instead thereof. And you will have to see how to provide for these 4, because every university will not be able to offer all the courses. So you might have to have a very open credit transfer policy from university to university, because a university may offer some courses which the student likes. All universities cannot offer all courses. So this will have to be made almost a norm. And I request Professor Gakkar, maybe all universities of Haryana sometimes at least can start credit sharing between themselves, because that will be the need of the day. That's the first step. Thereafter, the student will say, well, IIT professor is prepared to give me this course online. What problem do you have? Why don't you allow me to register for that course? If you also have to teach online, he's also teaching online. Physical premises is not important. So where is the problem? I'll register for that and give you the grade sheet. We will have to prepare ourselves for all that. And coupled with this, again, if you want to be a conscious quality online teacher, you will have to make sure that you make the best use of tools available, best use of resources available. And when I say resources, now it is online resources. And let me also tell you, when I talk about online resources, there are students who are deprived of online resources. In remote rural areas, you still do not get broadband. And if you don't get broadband, how do you get online education? A vice chancellor from a very big university in South Rangnia says, sir, I just want to discuss a problem with you. 30% of my students, I cannot even send an email because they're not connected at all. They're in rural areas where internet is just not there. So how do I reach them at all? How do we conduct their examinations? These are the real problems of this country. Government of India is very heavily working on providing broadband to every village very soon, but that very soon it also will take some time. That very soon cannot be as soon as a spread of COVID. So we will have to make sure. So I personally see a situation. Our universities will not only have to be flexible, teachers will have to be very flexible and empowered. Teacher will have to decide, well, I'll be able to teach today from home. Tomorrow I'll call the students in the class. And that will have to be permitted. Students will have to be empowered. A student says, sir, online is okay for you, but in my place, I don't have broadband connection. So you will have to give me complete face-to-face. And you might face a situation that there are 200 students in the class, 25 of them want 100% face-to-face, remaining 175 are happy with partly online, partly face-to-face. We will have to arrange for all this.
because that, and why not? Flexibility will have to be there. Today also we conduct examinations, some universities who are conducting examinations physically in the near next month or so, they are staggering. The same question paper cannot be given to 2000 students because I cannot make 2000 students sit in the university classrooms. So 500 will be called forenoon, 500 in the afternoon, 500 tomorrow. So 4 different question papers. So earlier we used to be very serious about the questions. If the question papers are different, how the marking can be uniform? Well, we'll have to learn to live with all these tools. We'll have to devise the tools and make sure that the students will be able to decide empowerment of the examinations. As a matter of fact, I definitely believe, day is not far when student will say, sir, I like you to examine me on 27th July. I'm comfortable that day. And we'll have to find ways and means. Within certain limits, it cannot be complete freedom to all, but within certain framework, we'll have to come to that kind of situation. So therefore, your university trying to do a faculty development program on the use of online resources is a very welcome step. I have seen the complete program which you had and which has been sent to me. I know almost all the speakers who have talked to you in the foremost. They are all really great in their own subjects. So you must have had a good feel of it. But more important is what you had the practice sessions in the afternoon. I mean, that probably is again a unique feature of this FDP. And I'm sure you must have made the best use of it. And I hope when you deliver online education now, you will be much better off. Friends, assessment will be another very difficult question. Online assessment does not mean multiple choice questions, because multiple choice questions have a very serious drawback. Although very rightly made, they can test quite a bit, but nonetheless, it has a limitation. And the scanning of answer book which some universities are adopting has its again limitations. How do you really monitor proctored examination, as they say? Yes, technology is coming up. The computer will keep an eye on you. Computer will not take any other input during the time of examination than what you're doing. All these things are coming, but nonetheless, there are challenges. And if we resort to online assessment also, situations are more serious. And you will have, for example, abroad, one very common practice is a group of teachers comprehensively talk to the student and evaluate him, just as we do in our country for PhD enrollment. A group of professors, normally in good universities, a group of professors will talk to the scholar for an hour and then decide whether he is a PhD material or not. So maybe something like that had to be done in other courses, and you will have to learn to believe the teacher. Tomorrow, if there has to be a question, well, this teacher was biased, this teacher was having vested interest, and this teacher was against me, all that will have to go. We will have to empower our teachers, believe our teachers. And I always say, if a university has hired you as teachers, then either they have made a mistake in hiring a wrong person, or we will have to believe that teacher. There is no other option. So let us be very careful in hiring, but after hiring, we have to empower our teachers. We'll have to trust our teachers. We'll have to believe our teachers. Otherwise, these systems, which are now being forced upon us, earlier in face-to-face examination, fictitious roll number, secrecy answer book, all that was working. Now all that will not be possible. And therefore, empowerment of teacher, believe on the teacher, his or her potential to do an honest job will have to be presupposed, and we'll have to devise ways and means for doing that rather than anything else. So therefore, whether it's online delivery, which I am very sure will become blended delivery, and that may remain for several years,
And why not also? Because in this process, we have been disrupted. See, we had a system of classes, then we had a system of 3-hour examinations. Now all that has been disrupted. Now, once it has been disrupted, why should I even decide to go back to the previous system 100%? Why not I make a judicious choice now? What can I pick up from the old system? What can I pick up from the new system of online learning and assessment? And what can I pick up beyond these two, in between, learning from best practices in the world and see what we do, and so on and so forth. So examination, teaching will be more individualized, and that is what we say in Education 4.0. Most of you teachers must have heard about Industry 4.0, where we have come to great revolutionary steps in industry. And Industry 4.0 also, you must have been exposed to Internet of Things, artificial intelligence, 3D printing, robotics, drones, virtual reality, augmented reality, so on and so forth. All these are subsets of Industrial Revolution 4.0, which has already started. And we were talking about the disruption of teaching because of these things, how Internet of Things will disrupt, how 3D printing will disrupt. None of us knew that a disruption will come which is stronger than all these small disruptions. And that came in the form of COVID-19. None of us knew. And this disruption is the highest disruption of the century, where so many countries are affected so badly. And we hope this remains the largest disruption in all your lifetime, and you don't have to face anything worse than this. But when this disruption has come to us, online education and assessment is one thing about which I have talked, but then it has given a complete change to Industrial Revolution 4.0. We have to now think many things different. Is it good to have very large industries which bring us to labor problems, or will it be good to go back to medium industries which can be managed near your homes? It's a question mark for us. How can we make medium industry more efficient? It's a question for us. Then transporting labor all over the country, maybe we have to transport machines, and so on and so forth. So the complete pedagogy may change. We might have to create facilities in the villages or in the clusters of villages, so that so much migration is not there, so that such problems are not there in future. And that may also help us, because India as a country is very much poised for that. We are sort of made for that. Every unit here was a sustainable unit. Every village, those of you who come from village background, every village was by and large a sustainable location by itself. We lost that out. We may have to rebuild it. Many of my teacher colleagues might have heard sustainability development goals. There are 17 sustainability development goals which have been debated in the world over for last several years. But practically, nothing much has come out. We have a sustainability development goal, zero poverty. Where is it? We have a sustainability development goal, zero illiteracy. Where is it? We have a sustainability development goal, innovation infrastructure. Where is it? I mean, not only in India, but even the best of the countries. So therefore, we will have to, all of us, work towards sustainability in a much bigger way and make sure that we don't face these kinds of situations. Second point, which I thought I'll tell you is COVID-19 situation would probably make you believe that no real life problem can be solved by specialists of one area. If we would have seen COVID-19 purely as a health problem and leave it purely to the doctors, we would have been in a complete mess. This problem had to be seen as a health problem,
as an economic problem, as a social science problem, as a transportation problem, as a rural migration problem, and so on and so forth. And then only we can reach towards some solution for this problem. Similarly, all real life problems in life are interdisciplinary problems. They will require you to have knowledge of several subjects. For example, providing safe drinking water to everybody. I mean, it's a problem. I mean, but can you believe where the world has so much water? Every child is carrying bottled water to the school for drinking. We cannot make sure that the schools will have safe drinking water. And these are pitiable situations. Energy problem. We'll be always short of energy. How far we go about it. So these are problems which do not have a solution in the subject of physics or chemistry or biology or electrical engineering or chemical engineering. Many of the subjects will have to join hands to solve these problems. And therefore, my request these days, earlier also, but more so these days, to all the vice chancellors is, if you decide to sacrifice 25% or 20% of core subjects, probably it will be a much less damage. But allow the students to take 20% of subject from other departments, from other schools. They will become probably much better equipped to solve real life problems than trying to be specializing only in one subject. So interdisciplinary education will be the name of the game which you will have to play. I'm an engineer, and I know from electrical engineering, we then discovered electronics engineering. From electronics, then we came to computer science. From computer science to information technology. And now there are universities which are saying, we will give BTech in artificial intelligence. We'll give BTech in Internet of Things. Now that kind of over specialization or super specialization, is it really good, is a question mark for all of us to think. When I was going to the website of AICTE, electronics and computer science, only these two subjects which are of my interest are available in AICTE in more than 40 nomenclatures. Electronics and telecommunication, electronics and communication, electronics and control, communication and control. I mean, more than 40. I talked to Anil Sastra, the chairman of AICTE, and he has started looking to the problem. But the point is, how far we keep on making a mess of the things. बाल की खाल कब तक उतारते जाएंगे? I mean, you have to become a human being first, then an engineer, and then an electrical engineer. I mean, we are becoming an electrical engineer, not an engineer, at least a human being. If that remains the flow of education, will be nowhere. First priority will have to be first priority. That if you're an educated human being, it has to be different than uneducated human being. I read a beautiful quote in the management. He says the entire education should be to convert human beings to being human. You have to be human. And then you become a scientist, manager, engineer. And then you become specialized. If you forget about this pyramid and take it to inverted pyramid, that's the price which we are paying. And lastly, I'll also tell you, any war-like situation is always very conducive for creativity and innovation. Many researches in the world came as a result of World War I, World War II, and so on and so forth. And whenever research is taken, please make sure solutions are not that easy. I was reading a case study in America. They were just trying to find out which is the best hospital in the town. And somebody suggested, rightly so apparently, that let us find out the death rate of all hospitals. The hospital which has the least death rate is the best hospital in the town. Now, to all of us, it may look like a very correct solution. But then when we went deeper into it, we found it was a completely wrong solution. Because the best hospital will attract patients only when they're close to death. When other hospitals will say you're a gone case, go there. So they get serious patients in such a large proportion, their death rate is high, but they're still the best hospital. So when you go to real life researches, solutions are very different.
I was reading the other day, uh, when the during war, always the bullets are fired on the aircrafts and all. And when they were trying to say, let us put a protective shield on the aircraft so that the bullet does not damage it. Now, if you put the protective shield all over the aircraft, the weight of the aircraft becomes very high, which again cannot be done. Therefore, the decision was being taken where to put the protective shield. Again, somebody rightly suggested, let us examine some 10, 20 planes which have come back from the war and see where the bullets have hit them. And they found, surprisingly, that most of the bullet holes were at the tail end of the aircraft. And a quick decision by some scientists, let's put the protective shield at the tail end of the aircraft because of most of the bullets are fired there. Unless some wise person came, he said, don't be in a rash. Most of the bullets were still fired on the engine side. Those planes could not even come back for you to study. And therefore, most of the planes which had their bullets on the engine side could not even come back, and therefore you are not able to count them. Protective shield has to be on the front side. So what I am trying to say is, real life researches are very different than laboratory researches. It is only laboratory, you say, okay, try it so much acid with so much base and give me the neutralization point. In mathematics, you say invert this matrix and give me the inverted matrix. In engineering, you say, oh, connect this to this and give me the reading. This all happens in the classroom. This does not happen in the life. And I think sooner our students and all our, I'm addressing teachers. So through you, I address all the students. You will have to become very open-minded to look at the problem in its entirety, in its totality, and then try to find the solution for this. For that, you will need the knowledge of several subjects, which you will have to acquire. And why I say this is, I conclude that for supplementary knowledge of other subjects, online learning will be the best tool, even after normalization. Face-to-face may be all right for your specialized subject, but then you must be asked to take some credit courses beyond your classroom. Their depth may not be all that important. Online education will continue to be a very powerful tool for those additional courses. And that is where I believe, do not give it up even when the situation normalizes. Practice the tools and learn the infrastructure very well. And I wish all the participants all the very best. I'm sure this FDP has given them what I wanted them to learn. And with these words, I wish you all the best out of this FDP and become better teachers to be benefiting all the students of the country, the society as a whole, and do all of us proud. With this, I once again thank Dr. Gakkar and all his team for a very innovative planning and wish you all the best in your future endeavors. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. So, sir, truly this FDP is in sincere effort to equip the faculty across the India, then how to make the online resources, how to use the already available online resources, how to manage their online classes using the learning management systems for attendance to evaluation and assessment, MOOC creation, video, audio lectures recording, then also how to use the softwares available to create such resources and to administer them online. So you rightly said that blended learning is going to be the key of the future. So uh, as you said, obviously it is not possible to cover all the 6,37,000 villages in a month or so. Government will take its own time. But obviously with this, we are also getting ourselves ready for this. And assessment, a better assessment system is need to be explored. We are trying to do that. We are on the way. And you rightly said, those who are going to swim the waves, they will cross the sea, and those who do not embrace this technology, they will struggle and they will feel frustrated, sir. Yes, the collaboration of different disciplines
to create a synergized effect of learning is the key. And you rightly said, sir, that it's about making the human beings being human. So, sir, with this lecture and your words, you made our day and you had given a grand opening to us. And with your blessing, sir, we all feel honored and delighted. You had given various food for thought that what as a teacher we can do in this direction. So, sir, on the behalf of Indira Gandhi University, I thank you for sparing your time despite of your being so busy, and this day is important for you as well. So thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Gurkha sir. Thank you, sir. Thank you. So with the permission, can we move ahead, sir? Sure. Thank you, sir. So in the row, we are about to begin with our technical session with Professor Rajkumar Yadav ji. He will be talking on Microsoft Teams. Sushant sir, please unmute Rajkumar sir. Sure, ma'am. Sir, please allow to unmute you, sir. Hello. Yes, sir. Am I audible, Sushant? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, first of all, thank you, Vice Chancellor, sir, and all the team of this organizing team of FDP to invite me here in this platform to deliver a talk on features and uses of Microsoft Teams. Sushant, am I audible? Sir, you are audible. If you allow me, can I formally introduce you with You can, few lines? Bharti. Okay, thank you, sir. So, dear participants, we had our start and we will move the journey with Dr. Rajkumar Yadav ji. So, Dr. Rajkumar is presently working as Associate Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Indira Gandhi University, Rewari. Prior joining to this university, he has served at Maharishi Dayanand University, Rohtak for more than 13 years in the Department of Computer Science and Engineering, University Institute of Engineering and Technology. He has published more than 100 research papers in different international journals and conferences. His research areas are information security, watermarking, and fingerprinting. He has successfully completed UGC major research projects. So, along with that, I personally admire him as a thorough gentleman, very polite and cool-headed person of our university. So, I welcome you, sir, on the behalf of Faculty Development Program team. Thank you for giving your precious time and knowledge to us. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will start our lecture. Can I start? Yes, sir. You may start. Okay. Have you stopped the annotation, sir? So that Okay. no one can interrupt in between. Yeah. Yeah, sir, over to you. You may start, please. Okay, first the features and uses of Microsoft Teams. This is the topic, today's topic. My topic is features and uses of Microsoft Teams. So first of all, what happened actually, this lecture will be divided into three parts. The first part is general discussion, second features, and third we will at last we will do the practical implementation of the features and uses of all this. So the first one is the general discussion. So what happened? Actually, nowadays there is a threat. All we know that we have to secure communication, we want to secure our data. And for that, first we will discuss about what is data actually.
So data is nothing but it is raw facts and figure which can be recorded. For example, today's temperature, today's humidity, all these two are data. And then the question comes, what is information? Actually, information is the process data. If the data is processed by some method, some methodology, some technique, some mathematical formula, then the output is information. Then we comes to knowledge. Then what is the knowledge? So these are the three terms: data, information, and knowledge. So knowledge is the if the data, if the information becomes true in some sense, then it is converted into knowledge. Means information always converted into knowledge. For example, before starting of any international match, there is weather forecasting, today chance of rain. They say before starting of the match, there is what percentage of chance of rain. So how we calculate the chance of rain? So chance of rain, suppose humidity on that particular day is 60%, temperature is 30 degrees centigrade, then the chance of rain is 70%. So this humidity and temperature both are data. These are raw facts which we can record it easily. So these two terms are data. Data here is means our temperature and humidity. And now this temperature and humidity is processed by a mathematical formula. Set mathematical formula is there, so by which we can find out easily the chance of rain. So how we get the chance of rain? From temperature and humidity, both data are processed and we will get chance of rain. So this is information. So as we have discussed, that is the information is processed data. So data is processed, then the outcome is information. Now if rain comes during the match, then it is converted into knowledge. So these are the three terms. All we should differentiate in these three terms: data, information, and knowledge. Now, for example, any student first time comes into the college or university. For that student, the college or university first time is data, information, or knowledge? Information, not data, not knowledge, because he know nothing about the internal structure of that college or that university. So for that particular student, a fresher student, that institution information, not knowledge, not data. Why not data? Why information? Because he processed the distance, the location, and presently he is on the institution. So the data is processed by the student. So it is information. And after 1 year, if somebody asks about that particular student, whether that is now it is this institution is data, information, or knowledge, after 1 year or after 2 months or after within 1 month, it may be knowledge for that. Why? Because he know each and every internal structure about that institutions, where is teaching staff, where is non-teaching staff, where is library, where is computer lab, all these things, where is examination branch. So he is well familiar about the institution. So now same thing, that is that particular institution is not information for that particular student, but it is now converted into knowledge. So these are the three terms. We have to have familiar about the difference between these three terms. Now I will discuss about some features of the Microsoft team. Dear participants, each and every nowadays we are using some tools, some platforms, whether it is Zoom or WebEx or this Microsoft team. So Microsoft team is slightly much different from all other platforms like Zoom, Google Meet, WebEx, like that. So basically the difference is that it is much more secure, or security is concerned. Nowadays security is very concerned, and the Microsoft assured that it is very secured, and it is the security point of view, it is not compromised. So the first thing is the Microsoft team features. So what is team? Actually Microsoft team just like a class.
So team is a chat-based collaboration. It is not just video conferencing like Zoom. It is chat-based collaboration product that is part of, that is to satisfy find the relevant information. Just 1 minute, please. It is a part of Microsoft Office 365 suite, having online meeting environment. It allows organization chat by teams and different channels within the team. It may be, so we first create the team, then after team, we will create the channels within the team and participants. In the last, we will do practical implementation, and I will discuss how we create a team and then how we create a channel within the team. So general channel will by default will be created at once when we will create the team. Another type of channel, the channel may be private, may be public, or the standard. So public channel means anyone within the organization can add more members within that team, that channels. Or if we select the private channel, so in private channel, what happen actually, we members cannot add further members within that channel. So this is the difference between the private and public teams or the channels. Now these channels themselves are a great innovative features. It is subset of the team members within the team, like team channels are also the private or the public standards. So we have discussed this. Now apps supported by teams. Participants, there are 2 apps supported by the Microsoft Teams window, desktop windows, and the mobile app. So both are supported by the teams. Then next is collaborative live in real time. We can complete work in real time within our clicks. For example, suppose a file is circulated among the team's members. So no need to update by each and every members of the team. Automatically file will be updated. So this is the great features. This is a very smart features which is available within the team. Next, collaborative with third party. In this, we can directly collaborate or we can invite the third party. Next one. There is a fast searching for information. Microsoft Team, there is a feature of searching. So we whatever we want to search, you can easily search within the team by using this option, searching information. Then next is recording storage. Use Microsoft Team has the feature of record their meetings and group calls to the capture audio, video, screen, and all these things are stored on the cloud recording. Now next, extreme security. At very start, we have discussed the security or the cyber crimes. So the Microsoft team, Microsoft assured that this team has extreme secure. Like nowadays we are listening about different threats on this platform like Zoom and etc. So these extreme security provides, Microsoft provides extreme security on Microsoft Teams. So there is no scope any intruder or hacker can hack our data. So you are free whenever you want to use the team, you can use, no need of any kind of threats. So these are some standards having the security point of view. There is a standard ISO 27001, that is a great standard. Next one, this what type of encryption decryption within the team. So the Microsoft provides encryption of our data. Encryption means a very secure data. Not directly the message will be transmitted to the third party. So we will see what actually encryption is, what actually decryption is. So encryption actually, what is information security? This encryption decryption comes under the information security. So the Microsoft team provides the concept of cryptography. So what happen actually in cryptography? Suppose I am a sender and Mr. X is a receiver. I write, hello, Mr. X.
So this HELLO, this message is converted into ciphertext. The message is encrypted. Direct hello will not send, so that the encrypted message cannot be retrieved, cannot be read by the intruder or hacker in between our communications. Now, this next technology is steganography technology. This is very important technology, very advanced technology. So what happened in steganography, Microsoft team also provide this technology, that is the steganography. So what happened actually steganography? Suppose I want to communicate some Mr. Y. So what happened in cryptography? Suppose I send the message hello. This hello is converted in encryption. H means alpha, HE, beta, gamma. So these are the ciphertexts, and a key will be sent along with this text. And at the receiver end, he will decrypt the data and he will easily read कि मैंने क्या भेजा उनको, hello. Now, what happened actually steganography? This is a very secure technology, and the research on this technology in India is at the child level. And what happened in steganography? What we want to send, that will not in visible form. It is much more secure than cryptography. Suppose I write a message hello. So this hello first will be encrypted, that means cryptography. Then this hello encrypted data will hide in a digital image within the pixels of the image. We will discuss after a little bit time. So that image, after having the message, is known as the stego image. So there is two images, original image and stego image. What we have hidden in a image, so a message with image having a image having a message is known as the stego image. We will see. Now this is another technique. This is beyond our scope of today's lecture. So this is cryptography. What we have. So what happened actually? Exchange of message using cryptography. जी राजकुमार सर जी सर एक बार है ना, आप अपने स्क्रीन के टॉप पर जाके ग्रीन बार होगा, उसमें मोर का ऑप्शन होगा सर, वहां पे जाके आप एक बार एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए सर. Where it is? Sir, on the top of screen जी there is a green bar. Green. Okay. Is the option of more. More. Yes sir. In more, the fourth option is disable participants to annotation. Okay. I have done. So Sam, thank you. Yes sir. Now it is. Now what actually in Microsoft team provides these cryptography techniques. So what happened is, this is, suppose this is sender, this is receiver. Suppose I want to send some information to this receiver. So this hello Kamaldeep, I sent a message hello Kamaldeep. So this is a key, along with I have to have sent to the receiver. So this hello Kamaldeep is encrypted by this message have been encrypted along with the key, and it is sent. And using this key at the receiver end, using this key, the message is decrypted again, and this hello Kamaldeep is received at the receiver end. So this is actually the cryptography, and Microsoft team support this technique for enhance the security of data. Now, this is steganography as we have discussed. So what is actually the difference between these two technology? Both technology supports by Microsoft. So cryptography, it is about concealing the content of the message, whatever the content of the message, that is concealed, that is hid by the sender, and so that the intruder cannot directly see the message. But dear participants, here there is no mention about the message hiding of the message. The message is there, but it is not in the readable form. It is in the encrypted form. And what happened actually in steganography, it is about concealing the very existence of the message. What it means? It means whatever, whether it is encrypted
message or whatever it is, the decrypted message that is not in visible form to the third party. So what it means? It means that there is no existence of the message. The difference between these two technologies is the content and very existence of message. यहाँ होगा content का conceal, content को hide करेंगे, जैसे hello भेजे हमने, HELL hide हुआ, cipher text is there and that text is visible, and there is some chance to decrypt that message by some intruder or the hackers. But here in this technology, the overall message has been hidden and that has been concealed. So this technology is very fast. And dear participants, it is assumed that the research has been done, evidence has been found by the FBI, Federal Bureau of Investigation, that when Bin Laden attacked US Tower, he used this technology, that is the steganography. Otherwise, the FBI is very intelligent. If they use cryptography simply, they can hack the message. And Bin Laden is basically the civil engineer, and he used the technique of steganography in a very efficient manner. So this is what is the steganography. So the comparison between these two technology, this is cryptography. Good morning, I have sent the message good morning. This is key along with this message. This is a function that is generated, and this is encrypted form that will be sent to the sender. This message is sent to the sender for receiving by the sender. This is the steganography technique. This is a secret message. Suppose good morning is same message here. This is a image. Any image which is in general life, very image. This is Lena image. Now, what actually happen is steganography, this advanced technology, and Microsoft support this technology. This secret message, this message will be hidden in this image. We will take the digital image, a function will be generated, a algorithm will be designed to insert the message within this digital form, and this is an image having the message good morning. Now, dear participants, see here, is there any difference between these two images? No. This is original image and this is stego image. Stego image means a image having the message. So we will hide the message in such a manner that there should be no difference between the original image and the stego image. This is stego image here. Dear participant, this is stego image. You must be clear about these two images. This is original image having no message, and this is stego image. The images are almost or 199.9% same. So the intruder or hacker cannot imagine that there may be the message within this image. And what happened actually, just 1 minute, please. Here, see here, within this image, there are the 00001 8-bit. This is message, hello Kamaldeep. So this message will be retrieved by the receiver. This message will be received by the receiver. Here, this is in between the sender and receiver path. That is the communication path. Here, the intruder or hacker cannot see what is going between this sender and the receiver. So what he sent and what he received, that will not receive, that is not visible to the intruder or the hacker. So this is much more secure technology. So we can say in a very similar way, this is a image of Baba Ramdev, and here the original image and the stego image with message hello. This is original image and this is stego image. Here is a message hello inserted within this digital image, and you see here, you see that is there is no difference between the image, that is between the original image and the stego image. So we can say that this is a very secure technology, very secure techniques, and Microsoft support this technique. So you can imagine, you can see that how much concerned Microsoft regarding the security. So this is all about our this second section. Now we will implement the practical section of the Microsoft team.
Just 1 minute. Just 1 minute, please. Now, Microsoft Team is a sub part of Microsoft Office. So type is here Microsoft Office login. Enter. There is first this Office 365 login. Click here. I have the password or login ID. That's why I'm directly with this Microsoft Office. There is a window having such type of options you have. Here, first is this Outlook. This. So whenever you will get the subscription of Microsoft Office, then you can get automatically these free of cost. There is no charges. First of all, they call this, let's see here, install Office. You can install the Office. Almost all of us, I'm very sorry to say, we have the pirated Office. So you will get 100% free licensed Microsoft Office. This is Outlook. You will get by this Microsoft Team. And what is the function this Outlook? That is the email services. This is the cloud storage. This is Word, Excel, PowerPoint. This is our OneNote. This OneNote is for making the organization PowerPoint, the websites. And this is the SharePoint. This SharePoints for no need to update individuals. We can share whatever the file is shared among the team members of the Microsoft Teams. Then all the members can share that particular file. They can update, their update automatically will be updated to the main file. This is Teams actually, Microsoft Team. This is a Microsoft Team. So we will click this automatically. There will be the message login and password, and I have already downloaded it. So we'll directly go to this Team. This is the platform of Team. Here at the top, very top, there is activities section. So whatever the activities within the team you have done so far, all this will be here. Now, second is chat. Just 1 minute. This is chat section. So whatever you want to chat, you can write here, hello, and this message have been sent. Now in the very similar way, this is Teams. The main concept, this topic is the Microsoft Teams. So this is Microsoft Team. Then we will create a team here. We will create the channels of the team. So let us see team. Now here see, join or create a team. Click here, dear participants. Hopefully you are very able to see here, join or create a team. Click. Here, there is two options, create a team or join a team with a code. Already you have created a team, so you just enter the code and directly you will able to log in the team. You can join directly the team. So here we will create a team, create team. Okay. Now these are the different options. A team from scratch. Originally you want to create a team. Second, create a team from an existing Office 365 groups, or already you have team. Within the team, you want to create another team, but suppose click, we want to create a new team. Now, this is the platform of team. What kind of team will this be? If you want to create a private team, as we have discussed, if you create a private, then the members of this team will not accessible to outsiders. If it is public, that means it is public, and this is the organizing team within the organization. If you want to create a team, so this is the, then we will click this. So if first we want to create a private team, suppose,
So first is give your team a name. Suppose MCA, want to create a team name MCA, and description. Let's people what the team all about. Suppose MCA class. Suppose is the subname of this team. Then create. It will take some time because we are live. It will take some time. Suppose next again we'll try. Some network issue. We'll try again. Create. Suppose public. Suppose description. Create. There is some problem in this. Anyway, we have a team already. We have already a team. Suppose this is Indira Gandhi University. This is a big tech team. We have already made a team. This is BTech team. This in BTech team, these are the channels within the team. Means you can say these are the sub teams of this team. These are the channel. By default, there will be a channel known as general channel. This by default, this is a CSC. Within BTech, this is a CSC channel. Then you can add, manage the channel. You can manage. This is BTech CSC. This channel moderation on off you can do. This is ECE channel within the BTech. And in this, we can add members. Suppose want to add user 1. Just wait, please. This is a channel, add members, start name, user 1. Actually, just wait, we'll log out it and log in again. Just wait 2 minutes, please. Again, we will log in, Steam. Just wait, please. It will take some time. Team. Admin.
loading. It is loading. It will take some time. Go to my own Microsoft.com. Okay, now hopefully it will be fine now. Just wait. Okay, now Teams. We are on Teams and join or create new teams. We are here. Now create a team.
Dear participants, sorry, I am switched to another computer. Just 2 minutes, please. No problem, sir. Sushant, No. Sushant, RY Yes, sir. is there in Zoom. Then connect me on RY. RY, sir. Yes, sir. Sir, you want to share screen from RY? Yeah. Rajkumar, sir, you can stop sharing screen from this PC. Okay. I'm doing that, Sushant. Just wait. Sushant? Yes, sir. Sushant? Yes, sir. Yes, sir. Sushant? Sir, am I audible? सर आपको आवाज आ रही है मेरा में am I audible? Sushant, you are audible, but I think Dr. Rajkumar is not listening to you. I mean, you are not audible to him. He may be having some problem in his microphone. Hello, Sushant? सर आपकी आवाज आ रही है हमें Dr. Rajkumar Yadav, we are listening to you. We can hear you, sir. Sushant? Uh, Sushant? Dr. Rajkumar, we can hear you. Sushant, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. You are audible, sir. Sushant, sir, am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Now it will be fine. I hope so. Annotation or करा दीजिए Sushant. Sir, please stop annotation from this screen also. Okay. Okay. Now, this is teams, and here suppose there is already team, general team, join or create new team, and suppose we want to create a team from scratch, private, give the team MSc chemistry, organic chemistry, suppose, create, now it is created. Starting typing the name of the group we want to add in this team, suppose user 1, user 2,
or user 10, suppose, then user 3, user 7, and just is not there. Suppose now add. So these users within this team have been added. See here, dear participants, see here, sorry for inconvenience. User 7, this is a member. And you can choose here as a owner. If we click here owner, then this user 7 can add more members within this team. And if you opt here member only, then he or she cannot add more member within that team. Okay. In the very similar way, user 3, user 10, and user 1. This now close. And here there is a team MSc Chemistry. You see MSc Chemistry, and by default there is a channel general. Now we can create more channel or add channels. Channel means fast inorganic. Inorganic, add. This channel has been created as inorganic chemistry. Now you can add more channels within this team, add more channel, suppose physical chemistry. You can add, here see, this is another features of this Microsoft team. Here privacy. By default, it is a standard. It is accessible to everyone on the team. Whatever the members within that organization, it is accessible if you choose it standard. And if you choose it as private, so only the selected people you want to add, they can use this channel. Now suppose this is private. Physical chemistry is a private channel we have created. Now you want to add the member of in this physical chemistry. Suppose user 1 is the member and user 10 is the member. Suppose this is only the 2 members, then add. These 2 members have been added. These 2 members have been added in this team, private team. Now see, there is a difference between an inorganic channel and physical chemistry channel. This is public. That's why there is no lock sign. This is secure sign, lock sign means this is a private channel. Nobody can enter. Whatever you want, being administrator, being admin, you want, you can add. But anybody which is unwanted, itself cannot add in this physical chemistry channel, being it is a private channel. So this is private. These add members, manage channel, where it is, you can change this is public, hide channel. These are the connectors. Here, delete this channel. If you want to delete, then you can delete the channel. So this is all about the channels of Microsoft Team. Here you can start the conversation. Hello, sports. So this message will be sent among all the members. All the members, hello has been sent. What about you? Like that, whatever you want to chat and do. Now this is the another here. This is the attachment. Whatever you want to send the files among the members of this team, you can attach. Suppose attachment. This is a feature. This is the drive पे है या हमारी कंप्यूटर पे फाइल है. Suppose upload
from my computer, any file from my computer. I can add, suppose this is a PDF file. I want to send to the members of this team only. This is a private team, sorry, private channel of MSc Chemistry team. This is team. This is by default a channel. This is another channel of this team, MSc Chemistry. This is the public channel, and this is a private channel. That is the physical chemistry. So this file has been shared among the members of the team. File has been shared. Anyway, now you want to meet now. So click here, meet now. So this is the Microsoft Meet, Microsoft team, by which we have created a private class, that is the MSc Physical Chemistry. So these are the members. We can invite. Our case, suppose, is already a member. Here from same features, that is the Google Meet or Zoom, you have the feature, enter full screen. So background effects, whatever you choose the background, you can turn off incoming videos, you can call the video calls, or you can end meeting, suppose. So this is one way to join a meet. And now another feature of this team is calendar. This 1, 2, 3, 4th one, calendar. From here you can fix the meeting. Whatever you want to talk, whenever you want to fix a meeting, you can. So suppose 20 in this, there here see participants here, please. These are meet now. Immediately you want to meet, you want to join a meeting, then click here, meet now. Then join now. Automatically you will be joined. Whatever the member, they will be shared this meeting. Again, leave this meeting. And next option of this calendar is new meeting. If you want to fix some new meeting, then click here, new meeting. Now add title. The title of the meet you want to decide, suppose maths. This is date. Suppose this is the time. Suppose 11:30 to this the day, all days. The meeting will automatically be fixed. Otherwise, days will be decided. Does not repeat. If or daily, weekly, monthly, yearly, whatever you want. So these are the facility. Now here see, please. These are the add channels. Whatever you want the channels, you can add here. Suppose you want to add this MSc Chemistry. And within MSc Chemistry is a team. And this is inorganic. You can add location. You can add title. The meeting has been fixed. Meeting has been fixed. So the message will be automatically sent to all the members. In this way, we fix, or this is the send option. This meeting has been created, namely maths. So the beautiful feature of the Microsoft team is within the same platform,
you can identical or you can divide the teams. That is the private. Suppose the vice chancellor or the principal of a college wants to take the meeting of the core committee of the university or the college, so he can isolate the teams, make the team private. Some people make the team public. Some people make the team standards. So this team has been created. That is the maths. And in the very similar way, you can add new meetings, whatever you want. So next, this is the call option. You can make the calls, audio call or the video call, whatever you want. This is the files you want to send. Already we have discussed. And these are the different apps which are freely available within this team. So these are the activities we have already discussed. Chat we have discussed. Teams we have discussed, means private team, maybe public team. This is calendar from where we can fix the meetings. This is call. This is meeting, which have we created. And now we want to suppose join this meeting. We can join the maths meeting. And join now. So anyway, whatever the member of this team, they automatically will join this meeting. So now suppose we are leaving this meeting. So these are the different features. Here you can send the message, this team. Now these are different apps which are freely available. These are different apps, near about 200 apps which are freely available with Microsoft Office 365. This is the forms. These forms are very similar with the Google form. We have created already, we have created the Google forms. All you are very aware about the Google forms. Some resource person, I hope, have delivered the talk on this Google forms. You can easily create survey, quizzes, and poll by these forms. So this Microsoft team is an integrated part. It is an integrated concept of Microsoft where you can create the forms, where you can make the calls, where you can chat, where you can do video conferencing. So the unique difference between these Microsoft team to the other platforms, that is the main difference is within the single platform, you can see more than 200 apps. Suppose for Google Classroom, we have to go for the Google. For forms, we have to Google. For video conferencing, suppose we have to go Zooms. So all these features have been integrated, and a single platform, Microsoft Teams. By this platform, we can do all these activity, and at last, the very good activity, very good features of this Microsoft team is the sharing of data among the team of the team members. That is the permanent team members. You can share the confidential data, whatever you want to share, you can share. Suppose there is examination data, and suppose there are 4 superintendents or the 5 clerks which are using these Microsoft Teams, and from the examination files, suppose Mr. X do some this correction, Y wants to do some this correction, they can do within the same file, and automatically the file will be uploaded, will be updated and saved on the cloud. So there is no need of different external storage. So this is all about this, our Microsoft team. Anyway, thank you, Sushant. Thank you, Bharti. Welcome, thank you, sir. Ma'am. Thanks to you, sir, for enlightening us on Microsoft Teams. And it's all about exploration. As people will explore more, they will learn more. But you had given a fair enough idea that what can be explored and what can be done through Microsoft Teams, sir. So thank you, sir. So with your permission, can we take one question? Okay, ma'am, you can. Sir, Dr. Mamta Kamra, ma'am, has asked a question. Ji.
that for Microsoft Teams basic pack, does Ji. a paid license is needed for educational purpose or not? Yes, ma'am. It is freely available, but on the we can compare to the free available Microsoft Team and the educational purpose. It is much more feature in educational purpose, so we must go for that, because nowadays there is a scenario we have to take the additional features of this Microsoft Team. And actually, not single Microsoft Team we have taken. We will take the license. You can take the license of Office 365. Within the Office 365, there is more than 200 apps, and within 200 there is Microsoft Team apps, which is fully equipped with its characteristics and features. So we must go for the licensed version. Okay, sir. Okay, thank you, ma'am. Excuse me, sir. Yeah. One of our participant, Dr. Manju Ghelawat, is want to ask you something. Sushant sir, unmute ma'am. Yes. Ji, Sushant. Manju ma'am, please allow to unmute you. Yes. Sir, I've done. A very good morning, sir. Very informative session. I have two questions, sir. First thing is that sir, am I audible? Yes, you are audible. Sir, my first question is that can Microsoft Teams be used as a learning management system, or how does it differ from it? So can we do that? Okay. Pardon, please. And sir, can Microsoft Teams be used as a learning management system, sir? I got your question. No, it is not a learning management system. It not support this management system. Okay, sir. The second question is regarding the students' enrollment, sir. Can the student enroll by themselves, or do we need to enroll them by giving some username or password, sir? I got your question, madam. If we create a class public, admin, suppose you are admin of your college. Hello. Yes, sir. I'm listening, sir. Hello. Hello, sir. You are suppose audible. you are admin of your college. You are admin of your college or university, then being admin, you can enroll directly. Student cannot enroll in the class. Being admin, you can enroll. Okay, sir. So do we need the email addresses for this purpose, sir? Or something else is required? Email or the WhatsApp, email or the mobile number, WhatsApp number, both. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Sir, one similar query that can we move the participants from WhatsApp group directly to Microsoft Teams? No, ma'am, no. This feature is not available. Hopefully, they are updating day to day. They are updating the Microsoft Team. Yes. Being the competitor of this new era, they are updating. Hopefully, they will add in. Yes, sir. Yes, sir. Earlier, even it wasn't free, but they had made it free now. Free now. Free. But as I have already discussed that in the free version, there are some limited, yes, you sir. can say the features. Limited features. And agreeing with you, sir, as like Manju ma'am has asked, I also worked on it, whether like Microsoft Team can work as an LMS or not, then it is not a complete LMS. So we require some more. We require certain more features when it comes to LMS. See, Swayam is an LMS portal. So, sir, Mamta Kamra ma'am also has raised her hand. And one more question, ma'am. Yes, sir. Our university, that is the Indira Gandhi University, is going to sign a MOU with the Microsoft Team, or not Microsoft Team, as such, the Office 365. Within Office 365, we have this Microsoft Team. And very soon we are going to, Vice Chancellor has been agreed, is very kind to sign a MOU with the Microsoft, and hopefully the affiliated college of this university will automatically be the member of this Microsoft Team, and freely they can use our features of the Microsoft Team. We will transfer the login IDs or the password, whatever, to the principals of the concerned college.
and then automatically they can use the features of Microsoft Teams. So this is the information for all the affiliated college. Okay, sir. Sir, one more question. Can we conduct webinars on Microsoft Teams? Yes, we can. Okay. So Mamta Kamra ma'am and Deepika Purohit ma'am, they have raised their hand. If they want to ask something, they may please. Yes, hello. Very Namaskar, informative session, Rajkumar ji. Namaskar ji, how are you? Fine, बड़ा ma'am. अच्छा सेशन था आपका. अरे हाँ, मैम, एक क्वेरी थी मेरी कि जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपने कहा कि विद इन द टीम्स इट सेंड्स द मैसेज लाइक if for video conferencing आपको कुछ देना है within second it will send the message to the team. Can a member outside the team like any other visitor you want to invite, can he or she join like in Zoom we send the message and they can join from anywhere? yes, as a guest we can invite as a guest, but they have no right to add further members. As a guest we can invite them. Okay, thank you so much. And again, I assured that anybody using this Microsoft Team, it is very secure, and security is very concerned nowadays. Dear participants, you are well aware that China is doing something wrong with India, and the Indian government has suggested we all peoples that delete these Chinese, like all the apps of Chinese apps. So we have to think in this direction. So this Microsoft is a very secure. This is used encryption, decryption technology, as we have discussed. That is the cryptography or the steganography. That is very advanced technology. Although the research on these technologies is very on the child level in India, but they are using. So it is very secure. Thank you. So, sir, last question for the session. Deepika Purohit, ma'am, you may ask. Yeah. Good afternoon, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, sir. First of all, hello, Deepika. indeed, how are you? I'm good, sir. How are you? Fine. Ji, Deepika. Sir, actually, my question is like bit simple and common too. जैसे हम सर एनरोल करते हैं जब स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट टीम में, तो आपने कहा सिर्फ जो ओनर है ही कैन ओनली ऐड द मेंबर्स. सो उसके लिए इज देयर एनी ऑप्शन फॉर बल्क एडिशन और वी हैव टू ऐड मेंबर्स इन वन बाय वन? One by one, or you ask if there is an option of bulk? बल्क एडिशन मतलब हम एक साथ बहुत सारे मेंबर्स को उसमें एनरोल कर सकें. Like, is there any option for that? Members can be added. There is an option multiple. There is an option of multiples. So choose that option multiple. By choosing that option, you can automatically add. तो सर उसके लिए हमें पहले कोई गूगल शीट वगैरह ऐसा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा और वी कैन ऐड विद no need to such features. That's why I have already taught. This is a platform where you see all the integrated features. There is a apps we have seen already, the 200 plus apps. So there is apps integrated. If you download that apps within the team, you can integrate whatever the member you want, whatever the team you want to create, whether it is the private or public. We can add means the lot of members within a team. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So with this, sir, we come to the end of this session, and thank you. Thanks a lot for sparing your time and your valuable knowledge to us. And hopefully this session would benefit our participants, and they'll be able to use and manage this Microsoft Teams for their meeting purposes and others as well. So dear participants, there is an information for you all, that the information regarding the feedback forms and the certificates will be shared in the evening valedictory session. So I request you all to join evening valedictory session well in time, and we'll be sharing this information there only. And one more thing, the details you provide in the feedback form will be considered as final for your certificate purpose. So please mention all your details carefully. So thank you, sir. Thanks a lot. So Dr. Bharti, can we have some feedbacks from some of the participants, as
some persons from CMA will join us shortly. Now only. Okay. Okay. So we Okay. can have some feedbacks from the participants. Okay. So I invite S. Satyam sir if you are available. S. Satyam sir, he is a person of computer science only, or any other participants may raise his or her hand if he wants to give feedback regarding the workshop and regarding this session specifically. So, S. Satyam sir, Sushant sir, I request you to unmute S. Satyam sir. Namaskaram, madam. Namaskar. So, this FDP program is very, very, very excellent, and it is conducted in a very organized manner. So I feel so happy. So many questions addressed by this FDP program. So even though the non-technical persons also happily they enjoyed, I think in my concept they are happily enjoyed with this FDP. So I wish IGU total FDP team in future also I think you will conduct this type of FDPs. Thank you one and all. Thank you, sir. Thanks a lot. So, Deepika Purohit ma'am also wants to share her experience. Sushant sir, please unmute her. Yeah, thank you, Sushant sir, and thank you, Bharti ma'am, for giving me this opportunity. Yes, Being sir. a part of IGU, it is obviously it is a very pleasurable experience for me, and all credit goes to the amazing organizing team of IGU, Bharti ma'am, Sushant sir, Meera ma'am, Ishwar sir, and everyone. You have done a great job, and all the resource persons were very well, like it. It is a very beautiful experience for us to listen such eminent personalities from various fields, like whether it was Mr. Atul Kothari or Mittal ma'am and our very own vice chancellor sir. So obviously the experience is very good indeed. All the sessions were very informative, and we have learned a lot, and I hope everyone has the same experience that I have, and will definitely try to implement all these experience that we have learned, everything that we have learned in this particular FTP in our routine, as we can learn so much and prove ourselves in the new normal that will be the online teaching. So thank you so much. Thank you for organizing such a wonderful FDP. Thank you, Bharti ma'am. Thank you, Deepika ma'am. So, needless to mention, we have one more person in our team, Dr. Mamta Agrawal. The timely messages you are getting, she's the only one who is behind it. Your WhatsApp messages, your mails, reply to mails, and all. So, entire backup task was done by Dr. Mamta only. So, thank you, Mamta ma'am. So, can we have Pankhudi ma'am with us? Miss Pankhudi Hello. Bhatia. Yeah. Yes, hello, ma'am. Am I audible? Yeah, sure. You are audible, ma'am. Okay. Thank you so much for giving me the opportunity to speak. I really want to thank the FDP organizing team for organizing this for us so meticulously, and you were always on time. So thank you so much for that. Secondly, I would also like to say I'm not a very tech-savvy person, but I got to learn a lot from all the sessions. Especially I want to say about the Moodle sessions, because I've used Moodle as a student, and I realized that in the because I used it as a student some 5-6 years back. So not all the features were there which we learned in these sessions. Secondly, in the pre-pandemic time, these were mainly technology was mainly used as a second fiddle, if I could say that. But now during the pandemic times and the post pandemic time also, we'll have to use it as the main I would say as the main course. So thank you so much for telling us that there are many more features which we can explore. And also a special thanks to, if I'm not wrong, Khanna ma'am, I think, who had told us about Kahoot and all the
because she sort of broke a lot of myths for me. I used to feel that we cannot make the sessions interesting, but she showed us how the sessions could be made much more interesting online. So thank you so much to all the people. And for today's session also, I would like to thank Sir, because we were waiting for this particular session, having learned that Microsoft Team is the most secure one of all the others that we've been using. So thank you so much, Sir, and thank you to the organizing team. Thanks a lot. So thank you, Pankudi ma'am, for these kind words. Obviously, ma'am, technology has its own limitations. Excuse Yes, me, sir. ma'am. Yes, sir. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे बीच में होंगे, तो सीएम हाउस से एक बार ऑडियो टेस्टिंग के लिए हमारे साथ सीएम हाउस से जुड़े हुए हैं, तो वो सर एक बार माइक टेस्टिंग, ऑडियो टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम इस सेशन को 2 मिनट के लिए रोक। Okay, sir, sure. सुशांत सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर क्लियर आ रही है आपको मेरी वॉइस, वीडियो? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। व्यू भी चेक कर लेना प्लीज सर। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, सब बिल्कुल ठीक है। ओके मैम, थैंक्स सर। सुशांत सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। So can we have one more person? I think Manju ma'am wants to say something at that time. Manju ma'am, if you are interested in sharing your experience, you may raise your hand. Yes, she had been one of the very active participants throughout this FDP and throughout our previously organized workshop as well. Welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the kind words. First of all, I would like to congratulate the entire university, because since past 15 days, all the team members of this FDP and the earlier PADA workshop, they were working very hard to make these two programs very success. And as far as this FDP is concerned, it was a grand event in terms of academics, and what we learned from it was it can't be explained in just in words. And all the resource persons, which they had a very great knowledge of their fields, and specifically the hands-on training by Mr. Surinder Singh and Ms. Poonam Panchal was great, and we learned lot many things about the new software, which is the need of the hour, I think. So I would again thank the entire team for giving us an opportunity in this pandemic time to learn from our homes, and so that we can implement these things for the benefit of our students. And one more thing, ma'am, it's a request that in future also, if you organize such programs, so please send a message to all of us or put it in your website, so that we can again join such kind of programs. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot for your kind words. So if like the persons like you appreciate, then it means we had been successful in doing our job. So thank you. I think we should take a break of 1 hour. Then we will resume at 2 with a session with Mr. Surendra sir and Ms. Poonam Panchal on Moodle. So that will be our closing technical session. And afterwards, our Honorable Chief Minister, he will be joining us for valedictory session. So thank you all. You may leave the meeting. So I think we will be continuing this meeting. Meera ma'am, please clarify. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We will continue this meeting. So we will be continuing this meeting, and but I request the participants, they may leave and resume at 2. So thank you all.
आप अनम्यूट अभी आप म्यूट हो सर। मैं अनम्यूट करता हूँ सर आपको। अभी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट में। हाँ अब आप अभी आ रही सर? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही ना? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो? हाँ सर, आपकी भी साउंड आ रहा है पूरा। अच्छा अच्छा, अभी क्लियर है ना सर हमारा? थोड़ा सा देख दीजिए आप बिल्कुल। सर व्यू बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब की कुर्सी बिल्कुल दिख रही है, पीछे हरियाणा सरकार और आप भी खड़े हुए दिख रहे हैं, बस आपका फेस नहीं दिख रहा है लेकिन सीएम साहब बैठेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। सर ठीक है सर। ये बस सर अब मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर, हैं? मेरे को लगा कि करते कोई पता ना हो। अभी हाँ ध्रुव जी, सर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर एक बार टेस्टिंग और कर लेंगे सर, है सर? श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कुछ पूछना है? इनसे बात कर दो ना। नहीं, बात मैं भोजन करने जा रहा हूँ।
Surender ji, have you joined? Mr. Surender, you have joined? Yes, ma'am. I'm here and I can hear you properly. Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me, ma'am? Hello? Mr. Surender Singh, have you joined? Yes, ma'am. Hello? 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 Madam, can you hear Hello? me? Yes, now I can hear you. Hello, good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Sir, How you are have you? joined. I think you have to share your screen, sir. Yes, ma'am. Annotation off कर दीजिए next to that. Shall I start, ma'am? Sushant, I am making you the host. Hello, Sushant Good afternoon, sir. ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, sir, you are audible. Hello, Sushant sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are very How are much you, audible. sir? Hello, sir. I'm absolutely fine, sir. So, अभी participants आ गए हैं and अभी break है आपका थोड़ी देर सर में अभी एक्चुअली में अभी सिर्फ 43 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कराया सर. ओके थोड़ा सा अर्ली है. ईश्वर शर्मा सर, नमस्कार सर. सुशांत सर, क्या हम एक काम कर सकते हैं अभी? हाँ जी सर. कि हम सभी पार्टिसिपेंट्स का वीडियो एक बार एक स्क्रीन ले लें, सभी का वीडियो ऑन हो सके और देख पाए कि हमारे ऑडियंसेस को भी. नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो रहने कोई ऐसे हो सर इसमें क्योंकि पार्टिसिपेंट खुद ही अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो. ओके, ठीक है. हाँ जी. Respected participants, if are you there, then can you please turn on your video. काफी पार्टिसिपेंट ने सर ऑन करी भी है. ओके, बहुत बढ़िया. एक ग्रिड व्यू आए, प्रॉपर आए. मेरी आवाज क्यों उधर इको हो रही है? किसके सिस्टम में इको हो रही है? प्लीज. या आज वैलिडिटी फंक्शन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप सब लोगों ने एक 7 डे जर्नी हमारे साथ कवर की, बहुत ही बढ़िया. और बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जान चुका हूं अपने LMS के थ्रू. उनकी इंट्रोडक्शन मुझे मिली एंड आई कम टू नो बहुत दूर से पार्टिसिपेंट्स हैं. कर्नाटका से हैं, दीमापुर से, नागालैंड से, जम्मू से. तो वेरी ग्लैड टू नो अबाउट दिस कि सभी पूरे इंडिया से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर वेरी कीन टू इंटरेस्ट इन सच काइंड ऑफ वर्कशॉप्स and they are learning a lot, I hope. And one important thing is basically today is not the ending of workshop. It may be the ending of workshop, but today is the beginning of your journey. आप लोगों की एक शुरुआत है, ठीक है, और शुरुआत है वो टेक्नोलॉजी के साथ. इस टेक्नोलॉजी के साथ आपने जो हमने आपको स्किल्ड किया है और आपने जो अपने इंटरेस्ट लेके अपने आप को रिफाइन किया है, उस स्किल को लेके आप अपने एरियाज में अब काम करें एंड ट्राई टू बिल्ड अप ए कम्युनिटी वेयर ऑल टुगेदर वी पीपल कैन मेक ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन आल्सो. तो बहुत बढ़िया. दीमापुर से जो मैडम है, क्या वो है अभी यहाँ पर ऑनलाइन है? कहाँ से सर?
मैंने अनाउंस किया है, शायद वो अगर मैडम होंगी तो प्लीज। वीरेंद्र कुमार सर, मीनाक्षी काला मैडम, ओके, अभी काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी आने बाकी हैं। इसके साथ साथ जब तक हम पार्टिसिपेंट आते हैं, आई विल शो यू समथिंग। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप नाउ इट इज विजिबल टू यू। हमने एक फ्लिप ग्रिड बनाई और आप लोगों को इनवाइट किया कि जस्ट कम टू दिस एड्रेस एंड गिव योर फीडबैक। काफी पार्टिसिपेंट्स ने अपना फीडबैक दिया यहाँ पर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लास्ट सेशन में भी बताया था कि टीचर्स ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझा और अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर फीड किया। ये रिस्पॉन्सेस हम लोगों के लिए भी बड़े एनकरेजिंग होते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी बड़े सही रहते हैं कि जिससे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर जहां उनको लगता है आपकी सजेशन आई, देन दे कैन इम्प्रूव देयर सेल्फ। ड्यूरिंग द वर्कशॉप आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर किया और कुछ एक्सपीरियंस मैं यहाँ से ले करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू शेयर विद द कंप्यूटर साउंड। A very good evening to all of you. This side Dr. Varsha Kapoor, Assistant Professor Sociology, Government PG College for Women, Gandhinagar, Jammu. Today's session taken by Poonam Madam and Surinder Sir was quite informative and knowledge enhancing. And I also want to add that this FDP is immensely increasing my existing understanding of online teaching. Looking forward to learn more. Thank you so much. सुशांत सर, जो अभी मैंने वीडियो प्ले किया, इसका ऑडियो था आपको ऑडिबल? यस सर, बिल्कुल क्लियर ऑडियो। ओके ओके। From Unity College of Arts and Commerce, Dimapur, Nagaland. I would like to thank the organizing committee. Hello everyone, I'm Aslan Jamir, Assistant Professor in Political Science from Unity College of Arts and Commerce, Dimapur, Nagaland. I would like to thank the organizing committee for organizing such a wonderful and practical FDP MOOC based on Moodle. Attending the session of FDP, I could say that it has enhanced me a lot, and I can confidently say that I can take online classes without any hesitation. I am not a techno-savvy woman, but attending this webinar, I should say that I can really take up the challenges, whatever may come. We've been attending webinars simply for the sake of taking certificate alone is not helpful, but this webinar is something which I can say that it will enrich me a lot because it has got practical session. And first I have to struggle a lot. I know I was struggling a lot, but this struggling will help me in the near future, because if this kind of pandemic, if this COVID-19 goes on, online classes is a must for all the teachers. So I think we all should try to cope up. We all try to cope with the scenario that is being going on. Thank you. So thank you participants. आप लोगों ने बहुत genuinely अपने feedbacks record किए, और अब मेरा feedback जो है participants के लिए मैं share करना चाहता हूँ। Participants ने बहुत ही अच्छे से इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी थी, या मतलब उसमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, इट डजंट मैटर फॉर अस, बिकॉज
while we are sharing our knowledge ना, in that case we expect कि जिसने knowledge grab करनी है, आज के टाइम में मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है, बट सर्टिफिकेट के साथ साथ स्किल जो है, नॉलेज जो है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो जो स्किल है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से गेन किया। मैंने आप लोगों की बहुत सारी जो असाइनमेंट दी थी और आपको जो स्पेस आपको जिनोमियो वगैरह पर मिला था, उन सब पर भी आपने जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। आप लोगों की असाइनमेंट्स आई, मूडल क्लाउड पर आप लोगों ने काफी काम किया। आप लोगों ने सभी रिसोर्सेज को यूज करके देखा, यूआरएल पेज और जो भी आपकी क्वेरीज आई, उन क्वेरीज से ही हमें पता चल गया कि हाँ आप लोग सभी प्रैक्टिसेस जो है करके देख रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि आप लोगों की बहुत ही प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन कि जिससे सबको बेनिफिट हो। सो इट्स रियली अप्रिशिएबल कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो किया और इस तरीके से आपने यहाँ पार्टिसिपेशन किया। तो मेरा आप सबके लिए फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव है। एंड डू द सेम थिंग, आपकी अपनी प्रैक्टिस बना लें, इस चीज को ना हैबिट बना लें कि जहां से जो भी अच्छा मिले, आपको जो भी लगे नॉलेजेबल ना, वो आप ले लो। और अगर आपने किसी भी वर्कशॉप सेमिनार को सिर्फ म्यूट करके या वीडियो ऑफ करके बैठना है ना, आप डोंट वेस्ट योर टाइम, योर लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इस तरह की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लोग कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आप किसी कोर्स को ज्वाइन करें, तो आई नेवर सजेस्ट दैट। आप जिस तरह से ये एफडीपी की है, ऑर्गेनाइजर्स ने जिस तरीके से वेल प्लान तरीके से ये जो वर्कशॉप बनाई और इन्होंने जिस तरह से कोऑर्डिनेट किया, सुशांत यादव सर ने, मीरा बांबा मैडम ने, ईश्वर सर ने और पूरी टीम ने जिस हिसाब से ये सारा प्लान किया ना, आप लोग भी इसी तरीके से अपनी अपनी जगह पे वर्कशॉप्स करवाएं, सेमिनार करवाएं और प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी सोसाइटी में स्प्रेड करें और लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग को स्प्रेड करें। सिर्फ और सिर्फ हमेशा ना भय का, डर का और इन चीजों को भी स्प्रेड नहीं करना होता। कभी भी ये व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ऑलवेज फिल्टर योर मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन कि उसमें से सोसाइटी में क्या पॉजिटिव चीज आप स्प्रेड कर सकते हैं, उस चीज पर ही ध्यान दें। नेवर वेस्ट योर टाइम कि भैया आपने एक वहां रजिस्ट्रेशन करवा लो, फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा, उधर करवा लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आईजीयू भी ऐसा कर सकती थी, बट इन लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही अच्छी सोची कि सब लोग जो है ना प्रैक्टिकली अपने आप में स्किल्ड हो जाए। और उसका रिजल्ट ये है, नाउ आईजीयू हैज देयर ओन वेबसाइट फॉर एलएमएस। अब उन्होंने खुद से अपना एक एलएमएस जो है यूज में लाने के लिए पूरा इनिशिएशन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड वेरी सून दे विल गेट स्टार्टेड विद द मूडल। और वो उसके साथ जाके अपना जितनी भी नॉलेज यहाँ उन्होंने गेन की है उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ फैकल्टी मेंबर ऑलरेडी पोस्ट लैब से जुड़े हुए थे और वो ऑलरेडी अपने कोर्सेज को कर भी रहे थे। So guys, I am very much happy with this workshop, with the organizers and the participants, and I really want to be connect in future also कि आप लोगों के साथ और proper अपनी जो है टीम इसके साथ में connect रहूं। सुशांत सर, is it possible कि आप पूनम पंचाल मैडम is online, तो आप एक बार उनको होस्ट बना दें, she will share something about technology. Sure sir. Thank you sir, thank you very much. So now Poonam ma'am is host. Poonam ma'am, welcome. Good afternoon. Ma'am, please unmute yourself. Hello. Hello, good afternoon ma'am. Sir, good afternoon. Thank you so much. And thank you so much all participants. Thank you so much organizing team. सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने एक 1 वीक वर्कशॉप जो कंप्लीट की है मूव्स और मॉडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और आज हम इसके फाइनल डे पे हैं। और इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का खास करके मीरा बामा मैम है, रानी मैम है, सुशांत सर है, इन सब का बहुत बहुत
थैंक्स, जिन्होंने बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छे वे में इस सारी वर्कशॉप को, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ जहाँ पे हो, जहाँ पे मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स हो, एक ऐसे वेबिनार को, एक ऐसी वर्कशॉप को, प्रैक्टिकल वर्कशॉप को खास करके इतना सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाना, ऑर्गेनाइज करवा पाना, सभी के सारी चीज़ों, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, किसी के टेक्निकल होते हैं, किसी के बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है आप हमारे लिए कि हम कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक टीम अप होके अच्छे वे में कंडक्ट कर सकते हैं. तो आई कंग्रेचुलेट द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड आई would like to extend my thanks to our honorable vice chancellor sir, जिन्होंने हम सबको, हम टेक्निकल पीपल जो हैं, जिनको ये सब जो हमने अपनी नॉलेज अभी तक हमने गैदर की है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, वो एक प्लेटफॉर्म पे असेंबल होना ज़रूरी है. तो ये सारा जो विजन है, ये सारा जो अपॉर्चुनिटी है, वो क्रिएट किया हमारे लिए वाइस चांसलर सर जी ने, एस.के. गकर जी ने. उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, कॉन्ग्रेचुलेशन. और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब हमें शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हम अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि टीचर्स वो है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देते हैं सोसाइटी में. अगर आप एक टीचर को शिक्षित कर देते हैं या स्किलफुल कर देते हैं, तो वो जाके पूरे नेशन को स्किलफुल और वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं. वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि अगर आप डायरेक्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें, ऐसी FDPs, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस वक्त ऐसे और प्रोग्राम्स की. तो मैं आप सभी से भी एक आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी ने यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है. आप लोगों ने जो एक वीक में इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, इतने सारे स्पीकर्स आए, यहाँ पे रिसोर्स पर्सन आए, जिन्होंने आप लोगों के साथ इतने अपने जो भी उनके पास थे, अपने एक्सपर्टाइज नॉलेज थी, उन्होंने आपके साथ शेयर की. तो ये अब आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जहाँ पे भी हैं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, पर्सनल लेवल पे भी. और अगर आप एक हायर पोस्ट पे हैं जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग पावर्स है आपके पास, आप ऐसे डिसीजंस लें ताकि आपके जूनियर्स को, आपके कलीग्स को, आपके स्टाफ को वो बेनिफिट मिले. सिर्फ टेक्नोलॉजी या चीज़ें सीखने के बैठने से वो बेनिफिट या वो चेंज नहीं होगा, जो चेंज उसको अप्लाई करने से होगा. तो फर्स्ट थिंग इज गेट स्टार्टेड. जब आपने कोई चीज़ सीख ली है, उसको फिर अप्लाई करना है, उसको अपने यूज़ में लेके आना है. इसीलिए हम लोगों ने ट्राई किया कि हम आपको मूडल के वो प्लेटफॉर्म्स दे सके जहाँ पे आप खुद से जाके ये सब चीज़ें जो भी यहाँ पे हम सीख रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली करके देख सके. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार की और वो हम आपको डिलीवर करके चले गए. नहीं, हमारी पूरी टीम की कोशिश यही थी कि आप हर एक जो भी हमने आपको टूल्स या ऑप्शंस यहाँ पे बताए हैं, वो आप उनको प्रैक्टिकली खुद से ट्राई करें. हमारी हर वर्कशॉप में यही रहती है कि हम कंप्लीटली, हमारा जो फोकस होता है वो है प्रैक्टिकल पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ा देंगे जब तक कि आप उसको करके नहीं देखेंगे. टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली अबाउट डूइंग प्रैक्टिकल थिंग्स एंड ट्राइंग आउट थिंग्स. तो मूडल का तो एक बहुत ही वास्ट एरिया है. हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम चीज़ें एज ए टीचर जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, वो हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर करने की आपके साथ कोशिश की है. बहुत सारे और भी अदर रोल्स हैं, जैसे कि मैनेजर रोल है, वो दूसरे रोल है, वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जाती है मूडल सर्वर के लिए और अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट करते हैं, तब वो वाली ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, मैनेजरियल जो रहेंगे जिसमें टास्क. तो वो आप एक टीचर वाला जो आपका सभी का रोल था, वो वाली हमने ट्रेनिंग दी है सभी को. और अब हम इस बारे में फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आप सभी एक बहुत अच्छे वे में, एक बेटर स्ट्रक्चर और इफेक्टिव वे में अपनी क्लासेस होस्ट कर पाएंगे यूजिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजीज. मूडल है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. एक छोटा सा पार्ट था जो मैं थ्रू आउट वर्कशॉप मैं डिस्कस करना चाह रही थी. हम सभी के पास जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है हम सभी के पास. तो जीमेल हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स देता है जो बहुत यूजफुल है हमारे लिए. वो सब चीज़ें एक बार मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस करें, एक थोड़ा सा टाइम लेंगे और उसका
देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। हम एक जीमेल अकाउंट के साथ हमें क्या क्या मिलता है। जीमेल सिर्फ एक चीज है जब हम अपना क्रिएट करते हैं मेलिंग के लिए अपना अकाउंट, ठीक है, बट ये गूगल की ही एक सर्विस है मेल, और हम जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं हम गूगल में अपना बेसिकली अकाउंट क्रिएट करते हैं। और गूगल की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो हमें इसके साथ जीमेल अकाउंट के साथ हमें मिलती हैं। तो जीमेल जो अकाउंट के तीन यूजर टाइप होते हैं, पर्सनल, बिजनेस एंड एजुकेशन। तो जैसा कि हम सभी तो पर्सनल यूज करते हैं, जब हम gmail.com अपने यूजर के साथ हम यूज करते हैं, जैसे कि poonampanchal@gmail.com, ठीक है, poonampanchal16@gmail.com। लेकिन अगर मैं poonampanchal@fosteklab.com बोलती हूँ, तो फोस्टेक लैब जो मेरी वेबसाइट है उसके डोमेन नेम के साथ मैंने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है। और ये फैसिलिटी मुझे जी सूट से मिलती है जो गूगल हमें देती है, और वो पर्सनल, वो बिजनेस और एकेडमिक दोनों यूज के लिए देती है। यहाँ पे हमें टीचिंग प्रोफेशन में एकेडमिक इंस्टीट्यूट होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब हम जी सूट की बात करते हैं, जी सूट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि हम अपनी मीटिंग होस्ट करते हैं गूगल मीट की, जो हम जैसे कि अभी तो हमने जूम पे अपनी मीटिंग की है, तो हम गूगल मीट पे भी अपनी मीटिंग कर सकते हैं होस्ट। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर से अपनी मीटिंग होस्ट करते हैं तो आप 100 पार्टिसिपेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जी सूट अकाउंट है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, तो उसमें आप अप्रोक्स 250 पार्टिसिपेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज वन बेनिफिट। उसके साथ साथ आपको आप अपने यूजर एक डोमेन पे सारे डिपार्टमेंट्स के भी बना सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, HOD फिजिक्स, HOD केमिस्ट्री @igu.ac.in। तो फर्स्ट उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट का भी एक पार्ट है जो मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी, कि बहुत सारे कॉलेजेस इस बात पे भी कई बार फोकस नहीं कर पाते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है, अगर आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है तो आपकी वेबसाइट .com नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए .ac.in, और उसके आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं .ac.in के। और ये आपको कमर्शियल जो ये बिग रॉक या जो दूसरे प्रोवाइडर्स है, डोमेन नेम प्रोवाइडर, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए एक अलग वेबसाइट है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट थोड़े प्रोसेस के बाद वो पूरी प्रोसेस हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो कैसे होगा। तो .ac.in URL आपका पहले तो वेबसाइट का होना चाहिए। जब आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, तो इसके साथ साथ आपको जीमेल सूट मिलेगा। जीमेल सूट आपको फिर लेने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप 10,000 के करीब आपको मेल की फैसिलिटी मिलती है रेगुलर। आप पर डे रेगुलर 10,000 एक लिमिट आपको मिलती है मेल की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। My screen is visible. So as you can see, first of all I will take you to my Gmail account so that it will be easy कि आप लोगों को समझ आएगा। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये डॉट्स मिलेंगे। आप जहाँ पे भी हो, चाहे आप जीमेल में हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, आप जहाँ पे भी होंगे आपको ये डॉट्स दिखाई देंगे। ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं जीमेल की सारी सर्विसेज। उसमें ड्राइव है, कैलेंडर है, जीमेल है, मीट है, ट्रांसलेट, फोटोज, बहुत सारी बहुत ही यूजफुल सर्विसेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे इनके डॉक्स, शीट्स। इस वक्त मैं ड्राइव में हूँ, आप देखेंगे URL का मेरा
drive.google.com। मैं ड्राइव में हूँ। तो ड्राइव क्या है, एक हार्ड डिस्क, हमें क्लाउड पे एक स्पेस मिलता है हम हर एक यूजर को जब हम अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो आपको 15 GB का स्पेस मिलता है हर एक यूजर को। यहाँ पे ये क्लाउड स्टोरेज है बेसिकली। यहाँ पे आप अपने फाइल्स फोल्डर्स सेव कर सकते हैं, और सिर्फ सेव नहीं कर सकते हैं, आप उन सबको शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक URL आप शेयर करेंगे और आप अपनी फाइल को सबके साथ वो शेयर कर सकते हैं। लेट मी शो यू कैसे होता है ये सारा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइव में हूँ। ड्राइव में आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, drive.google.com you need to type and then you will log in using your Gmail account, or you can also go using your Gmail account as well. When you are into mail, like I am going into my mail account, mail. तो अभी मैं जीमेल में हूँ। ये देखिए, जीमेल में आपको सेम डॉट्स मिलेंगे, और यहाँ से आपको सारी अपनी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। आप डायरेक्टली URL के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे कि drive.google.com करके, या यहाँ से भी जा सकते हैं आप। यहाँ पे ये ड्राइव का आइकन है, ड्राइव पे मैंने क्लिक किया और मैं फिर सेम वहाँ पे ही पेज पे हूँ जो मैं यहाँ पे मैंने पेज ओपन किया था। तो ड्राइव पे आपको मैं दिखाती हूँ कुछ चीजें आपको मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू, ये प्लस का आइकन बना हुआ है, फिर माई ड्राइव, शेयर विद मी, रिसेंट और स्टार्ट बिन। आप देखेंगे नीचे स्टोरेज का भी दिया है इन्होंने, जैसे 15 GB आप मैक्सिमम आपको मिलता है 2.7 GB मैंने अभी तक यूज किया है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, यू कैन ऑल्सो बाय द स्टोरेज एज वेल। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम फाइल अपलोड कैसे करें अपनी ड्राइव पे। तो यहाँ पे न्यू पे मैं क्लिक करूंगी एंड देयर आर द ऑप्शन फाइल अपलोड और फोल्डर अपलोड। See, I can go for single file upload also, and I can also upload a complete folder also. I'm uploading a file. कल आपके साथ एक PPT हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो शेयर करना था, तो I will try to share using my drive folder link. So this is the PDF file. पहले से आपके कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए जो भी फाइल आप शेयर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग 1 आइटम अपलोड हो गई है। ये यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन इन गूगल डॉक्स। तो अभी ये गूगल डॉक्स में मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन मुझे शेयर करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक बार मैं रिसेंट फाइल्स में जाती हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपडेट किया तो वो मेरी रिसेंट फाइल्स में आ जाएगी। तो ये फाइल है जो मुझे शेयर करनी है किसी के भी साथ। सर सुशांत सर, हेलो सुशांत सर, मीरा बामा मैम, I just need email ID of our organizers so that I can share this PDF file with you. Okay. Shashank sir, can you hear me?
Okay, I have to unmute you. Okay. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, I Email. just need email ID. हाँ जी. Yes, sir. FDP हाँ जी. @igu.ac.in. Okay. fdp@igu.ac.in. Okay, sir. Yes. Okay. So I am just selecting the file जो मुझे शेयर करना है. आप देख रहे हैं ये अब select है और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आपको मिलेगा get shareable link. उस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लिंक जनरेट होके आ गया है. ये लिंक आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं बट ये रिस्ट्रिक्टेड है. आप यहाँ पे देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडेड वन कैन ओपन विद दिस लिंक. तो मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड से हटा देती हूँ एनीवन विद द लिंक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसको भी मैं ये लिंक शेयर करूँ वो डायरेक्टली इस पीडीएफ फाइल पर आ जाए. ठीक है, तो मैं यहाँ से और भी चेंज कर सकती हूँ कि ही कैन व्यू और ही कैन कमेंट, कमेंटर और एडिटर, कोई भी मैं रोल देना चाहती हूँ. तो अभी मैं सिर्फ व्यूअर का रोल दे रही हूँ कि वो इस पीडीएफ फाइल को देख सके. तो कॉपी लिंक, मैंने कॉपी किया लिंक को एंड डन. ओके, अगर मैं डायरेक्टली लिंक शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं चैट में डाल देती हूँ तो आप लोगों को भी ये मिल जाएगी फाइल. मैं अभी एक बार चैट में भी डाल देती हूँ ये फाइल. चैट बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. इसमें मुझे किसी से ईमेल आईडी भी लेने की जरूरत नहीं है. आई विल शेयर द लिंक डायरेक्टली और सभी को ये पीडीएफ फाइल जो है अवेलेबल हो जाएगी. यहाँ से एक बार क्लिक करके देखिए. और अगर सिर्फ मुझे सिंगल पर्सन के साथ किसी के साथ शेयर करनी है तो मैं फिर से वहीं पे क्लिक पे लिंक पे जाऊंगी. ओके, ये तो लिंक के लिए, सॉरी, मैं इसमें फिर थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम, स्लो हो गया एक्चुअली, हैंग नहीं हुआ. जस्ट वेट अ मिनट. तो मुझे एक ईमेल के साथ शेयर करना है तो मैं यहाँ से इनवाइट करूंगी और यहाँ पे मैं FDP ईमेल आईडी बेसिकली मैं टाइप करूंगी यहाँ पे. Ma'am, it's fdp@igu.ac.in. हाँ जी सर, जस्ट ये ठीक है ना सर? fdp@igu.ac.in. Yes, ma'am. ठीक है. I can choose the role from here, editor, viewer, whichever I wanted to give, or send. Okay. So I have added this person here in this file. So this is the way I can upload my files in my Google Drive and I can share with any of my
contacts. I can also generate a shareable link using this option. ठीक है, अब ये जो शेयर करना है, जो ऐड किया मैंने एक फाइल में व्यूअर को, इसकी उस पे मैं एक और ऑप्शन चूज कर सकती हूँ जब हमें एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना है। हम एक सिंगल फाइल पे एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम भी कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप एग्जिस्टिंग कोई फाइल अपलोड करके उसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ से यूजर्स, या आप एक नई फाइल क्रिएट करें यहाँ से जाके। आप देखेंगे यहाँ पे आपको सभी जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, गूगल डॉक्स है, शीट्स है, स्लाइड्स है, मोड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म्स और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मैं अभी सिंपल एक गूगल डॉक्स पे ओपन करती हूँ और उस पे हम काम करके देखते हैं। सुशांत सर, हेलो हेलो। Yes, ma'am. Sir, can you share me your email ID if we can work currently on same document? Yes, ma'am. It's Sushant, SUSHANT. Wait a minute. It's sushant@igu.ac.in. Just it. Sushant, SUSHANT. And yes, @igu.ac.in. Okay. So I'll be sharing this document with you and हम सब अभी ऑनलाइन सेम डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। आप एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप को अभी? Yes, ma'am. मेल को एक्सेस कर पाएंगे आप? कर सकता हूँ रिमोट कंट्रोल से। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक मेल करूंगी, आपको एक मेल मिलेगी। नो, आपको मेरे यहाँ से एक्सेस नहीं करना है, मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगी और आप अपने ही सिस्टम से करेंगे उसको, ठीक है? श्योर मैम, श्योर। सी, मैंने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट की। सो एक फाइल है और इस पे हम एक साथ ऑनलाइन बैठ के भी काम कर सकते हैं, या मैं लिंक शेयर करूंगी जिन के साथ मैं एक फाइल पे मिल के एज अ टीम काम करना चाहती हूँ। दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर रिसर्च स्कॉलर्स और योर स्टूडेंट्स एज वेल, कि आपने एक स्टूडेंट्स की ग्रुप को एक किसी भी फाइल पे, एक किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने इकट्ठे उनको काम करने के लिए बोला है, तो वो एक ही फाइल पे, उनको मल्टीपल कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी सिंगल फाइल और सभी उसी पे काम करेंगे, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसने एक ही फाइल में किस किस पार्ट में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे। सो मैंने ये फाइल क्रिएट की है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ। पहले मुझे नेम देना है। नेम देने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कहाँ से आया ये। पहले मैंने क्योंकि नेम नहीं दिया था तो इट आस्क मी टू गिव अ नेम। ओके, अब नेम दिया है तो इट वॉन्ट आस्क मी अगेन। आई विल क्लिक ऑन शेयर और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दूंगी जिसके साथ मुझे शेयर करना है। मैंने सुशांत सर की ईमेल आईडी यहाँ पे ली है, ठीक है। आई हैव एडिट और यहाँ से मैंने रोल चूज किया है एडिटर। मैं उनको एडिटर बनाऊंगी क्योंकि आई वांट हिम टू एडिट दिस डॉक्यूमेंट।
सुशांत सर, आपको एक मेल मिलेगी, आपने, हाँ जी, वहां पे क्लिक करेंगे, आप इस डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। आ गया हूँ सर। हाँ जी, now you can we can see here S. It means Sushant sir is now in document and he is typing right now. हाँ जी, see, I can also go here. So हम एक साथ एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसने किस पार्ट में काम किया है, किसने किस पार्ट में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फाइल में वर्जन हिस्ट्री, सी वर्जन हिस्ट्री पे मैं जाऊंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा कलर वाइज पार्टी इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि जो ये ग्रीन पार्ट है दैट इज एडिटेड बाय मी पूनम एंड द पर्पल वन इज एडिटेड बाय सुशांत यादव फ्रॉम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो इन दिस वे आप सिर्फ फाइल ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एडिटर मिलता है, जो कि आप MS ऑफिस अगर आप यूज करते हैं, ज्यादातर यूजर उसी को यूज करते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको बनाया गया है। सारे टूल्स हैं यहाँ पे एडिटिंग के, आपको लेके कलर्स हैं, यहाँ से आप फाइल शेयर कर सकते हैं। न्यू बनानी है आपको, न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। न्यू में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है। सुरेंद्र सर ने आपको एक टर्म बताई थी कल कि जब हम बोलते हैं कि मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, नहीं, वो टर्म गलत है, बिल्कुल गलत है। हम एक्सेल फाइल को क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट। प्रेजेंटेशन, जो हम PPTs बोलते हैं जिनको, वो प्रेजेंटेशन है एक्चुअली, पावर पॉइंट नहीं है, वो प्रेजेंटेशन है। ऐसी डॉक फाइल है। ठीक है, तो ये सारे हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। कॉपी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से। आपको अपने खुद के यूज के लिए एक कॉपी डाउनलोड करके रखनी है अपने कंप्यूटर में, आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट चूज करके यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ईमेल में अटैच कर सकते हैं। रीनेम करना है तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। प्रिंट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो पेज सेटअप है, सारे ऑप्शंस जो आपको एक किसी भी एडिटर में, आपको ऑफिस सूट में मिलेंगे, वो सभी आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एक सिंपल डॉक बनाने का था हमारा ऑप्शन। अच्छा, आपके इस तरीके की डॉक्यूमेंट बनाने का फायदा क्या है? पहले तो आपको मल्टीपल फाइल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, आप सिर्फ एक सिंगल फाइल शेयर करेंगे सबके साथ, और वो फाइल सबको विजिबल होगी। और उसके साथ साथ आपने जितने भी चेंजेस किए उस फाइल में, कितनी भी बार आपने चेंजेस किए, तो आपको मल्टीपल टाइम मेल नहीं करना है, आपकी वही अपडेटेड फाइल सबको मिलेगी सेम लिंक पे। गॉट इट? इसी तरीके से हम एक फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। अब फोल्डर में बहुत सारी फाइल आप शेयर कर सकते हैं। आपने कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक फोल्डर बना के सारा फोल्डर आपने शेयर कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फोल्डर में आप कितनी भी फाइल्स अपडेट कर दें, डिलीट कर दें, ऐड कर दें, तो वो जो आपने फोल्डर का लिंक शेयर किया है वो अपडेट होता जाएगा अपने आप। जब भी आप उसमें चेंज करेंगे, आपने फाइल डिलीट की, वो भी अपडेट हो जाएगा। और वो जो आपने जिनके साथ भी शेयर किया है उनको अपडेटेड फोल्डर ही मिलेगा, हर बार आपको नया फोल्डर शेयर नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द बिग ब्यूटी ऑफ दिस ड्राइव जो हमें देता है गूगल ड्राइव। ड्राइव में फोल्डर बनाने के लिए भी सेम है। न्यू पे हम जाएंगे, आप यहाँ से अपलोड फाइल, जैसे हमने अपलोड फाइल की है, हम अपलोड फोल्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक अपलोड फोल्डर का ऑप्शन चूज करती हूँ। अच्छा, आप अपलोड भी कर सकते हैं फोल्डर, या आप एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें सारी फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर ले लेती हूँ, ये वाला Moodle FDP ISU, मैंने एक फोल्डर बनाया है। इसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं।
तो ये मेरी फाइल है Moodle FDP IGU, ये फोल्डर, सॉरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम है। मैं इसको शेयरेबल लिंक भी बना सकती हूँ, रिस्ट्रिक्टेड और एनीवन कैन क्लिक, दोनों मोड है मेरे पास। कि मैं चाहती हूँ कि मैं परमिशन ले, जो भी इस लिंक को ओपन करे उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़े, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड भी बना सकती हूँ या मैं इसको ओपन भी बना सकती हूँ। आप सिंपली फोल्डर आपने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से ये अभी रिस्ट्रिक्टेड है जो ये लिंक बना है, और आई कैन ऑल्सो गो विद द एनीवन can click the view the link with this anyone on the internet with this link can view। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ से सिंपली कॉपी करके शेयर कर देंगे आप। मैं यहाँ से भी एडिटिंग का भी रोल चूज कर सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो जिनके साथ भी मैं एडिटर ये लिंक शेयर करूँगी ये फोल्डर का, वो अपनी अपनी फाइल्स इसमें अपलोड कर सकें, तो मैं एडिटर का रोल दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ इसको शेयर, मैं सिर्फ सुशांत सर के साथ ये शेयर कर लेती हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा इसका भी प्रोसेस, तो सेम है। ये देखिए, मैं इनको व्यू का ऑप्शन देती हूँ, तो सर के पास ये फोल्डर चला जाएगा। अब मैं इसमें मल्टीपल फाइल्स ऐड कर सकती हूँ, जब भी मुझे और भी फाइल ऐड करनी है तो वो इसमें अपडेट हो जाएंगी जब भी मैं कोई भी नई फाइल इसमें डिलीट या ऐड करूँगी। ठीक है, अब मेरे साथ कोई फाइल शेयर करता है, सर आपके साथ जैसे मैंने शेयर की है तो आपको कहाँ मिलेगी? शेयर्ड विद मी। यस मैम, मिल हाँ चुकी है, जी, मैं ओपन कर चुका हूँ इसे। जी जी, तो 3D आपके model। साथ जो भी फाइल शेयर्ड होंगी वो आपके मिलेंगी शेयर्ड विद मी में। जो मैंने अपलोड की हैं, क्रिएट की हैं फाइल्स या फोल्डर्स, वो मुझे मिलेंगे माई ड्राइव में। ठीक है, रिसेंट में आपने जो भी रिसेंटली एक्टिविटी, जो भी फाइल पे काम किया, फोल्डर पे काम किया, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे रिसेंट में। आप स्टार्ट भी करके रख सकते हैं अपनी फाइल्स को, ताकि वो आपको स्टार्ट फोल्डर में मिल जाए प्रायोरिटी वाइज। मैंने आपको अभी बताया कि आप अपनी फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे उनको शेयर कर सकते हैं। प्लस हमने क्रिएट किया अपनी डॉक्यूमेंट, ये आपको ड्राइव में ऑप्शन मिलते हैं कि आप हर कोई भी तरह की आप अपनी डॉक्स हैं, शीट्स हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन है, मैम ये आप प्लीज क्रिएट कर डिसेबल सकते हैं। एनोटेशंस। हाँ जी, यस यस, आई हैव टू आल्सो इरेज दिस। Sir, how I can remove this notation? Ma'am, please press escape button when or minimize the screen. No, I have disabled the notation, but see, I'm not able to clear it. मैम एक बार आप ना स्क्रीन को वापस मतलब एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा। ये एक्चुअली में जिस पार्टिसिपेंट ने करा है वही इसको इरेज कर सकता है। एक मिनट, मैं देख पा रही हूँ शायद क्लियर। अच्छा, ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस विंडो से जाना पड़ेगा मुझे एक बार। हाँ जी मैम, मिनिमाइज कर दूं मैं एक बार। क्लियर ऑप्शन से नहीं हो रहा मैम? एक मैम क्लियर ऑफ से नहीं हो रहा है मैम। एक मिनट मैम, स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए मैम। एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप शेयर करके ओके ठीक है सर, आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिए। एनोटेशंस ऑफ कर दीजिएगा मैम। हाँ जी, यस, मैं पहले वही कर देती हूँ। यस मैम, एक मिनट, आई हैव अलाउड देम और आई हैव डिसेबल्ड देम। एक्चुअली आई अलाउड देम, वेट अ मिनट। मैम इसके जस्ट ऊपर एक और ऑप्शन होता है, शो नेम ऑफ एनोटेटर, आप उसको भी अलाउ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, डिसेबल
कर दिया है मैंने, हाँ जी, अभी डिसेबल है। यस यस माय स्क्रीन इज विजिबल सर? यस मैम। Okay, so we have discussed how we can manage our drive, where I can upload my files, I can create my folders, I can share my files and folders with my contacts as well. I can work in a collaborative environment with my team as well, with my students. तो गूगल ने हमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब से डायरेक्टली क्या होगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब वो आपको मिलता है ये फैसिलिटी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखोगे तो ये मेरा आप भी खुद भी क्लिक करेंगे तो आपको भी सेम स्क्रीन आएगी और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट अपलोडिंग योर वीडियोस फ्रॉम हियर। तो आपको स्क्रीन ऐसी ही आएगी, उसमें आपको यहाँ पे जो ये आइकन है प्लस आइकन, क्रिएट आइकन, यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर सकते हैं, अपलोड वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने खैर ऑलरेडी क्रिएटेड है ये हमारा चैनल। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। आई कैन सी माई चैनल ऑन गोइंग क्लिकिंग ऑन योर चैनल ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। कुछ और सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपका एक, जब आप अकाउंट यूट्यूब अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, चैनल आप क्रिएट करते हैं, जब आप इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप वहाँ पे रोल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइब्रेरी है ऑप्शन, हिस्ट्री, योर वीडियोस, सब तरह के जो भी मैंने ऑप्शन हैं एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। प्लस मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस को अगर मुझे एडिट करना है, अपलोड करना, यहाँ से आप डायरेक्टली जाएंगे और अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। एक वीडियो अपलोड करके देख लेते हैं। मैं अपलोड नहीं करूंगी, आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगी मैं सिर्फ। ठीक है, मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ एक फाइल, वीडियो फाइल मेरे पास होनी चाहिए पहले से, ठीक है। एक फाइल है मेरे पास, मैं वो शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ से आप टाइटल देंगे फाइल का, कंपलसरी है टाइटल देना, रिक्वायर्ड है ये, ओके। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप यहाँ से। अभी मेरी वीडियो प्रोसेस में है, अपलोड नहीं हुई है अभी, अब होने के बाद मुझे विजिबल होगा कि कैसी वो दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसी जब किसी को भी विजिबल होगी ये होगा। लेकिन मैं यहाँ से एक मुझे ऑटो जनरेटेड ऑप्शन मिलते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन क्या चाहती हूँ कि फर्स्ट स्क्रीन क्या है, यहाँ से मैं चूज कर सकती हूँ, या मैं खुद का एक डिजाइन भी कर सकती हूँ कि मेरी जो स्क्रीन जो रहेगी उसको हम बोलते हैं थंबनेल। थंबनेल क्या रहेगा मेरी वीडियो का, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद से डिजाइन कर सकते हैं किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके, और यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्लेलिस्ट आप चूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ से मैं चूज कर रही हूँ। यहाँ मुझे कोई नई प्लेलिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ से जाऊंगी, जैसे कि मुझे कोई अपने लेसन्स क्रिएट करने, अपने लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर ऑन कंप्यूटर, मैंने एक कैटेगरी यहाँ पे चूज की है, ये लिस्ट, ठीक है। पब्लिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। पब्लिक में बिल्कुल ओपन है कि आपके इस वीडियो को कोई भी देख सकता है यूट्यूब पे जाके। आप मतलब आपका चैनल आपने लिंक शेयर कर दिया या किसी भी आपके धीरे धीरे सर्च इंजन में भी आपका आना शुरू हो जाएगा,
तो पब्लिक है तो वो सबको विजिबल होगा, प्राइवेट सिर्फ आपको विजिबल होगा। आप अपने खुद के वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं, आपकी फैमिली वीडियोस हैं, आपके फंक्शन वीडियोस हैं, वो आप प्राइवेटली यहाँ पे रख सकते हैं, आपको स्टोरेज मिल रहा है। आप अनलिस्टेड कर सकते हैं उनको। अनलिस्टेड में आप जिनके साथ लिंक शेयर करेंगे केवल वही ओनली उन्हीं को विजिबल होगा, उन कॉन्टेक्ट्स को ही विजिबल होगा आपका। तो मैं पब्लिक कर रही हूँ यहाँ पे इसको और क्रिएट। अब मेरी एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है, मैंने इसको चूज किया, डन। ठीक है, इफ इट इज मेड फॉर किड्स देन आई कैन चूज दिस, और इफ इट इज नॉट तो मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगी। मोर ऑप्शंस में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, वो है टैग्स। अब आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सर्च में आने शुरू हो जाए, वो क्या कौन करता है, ये इफेक्ट होता है टैग का। आपके टैग्स जितने इंपॉर्टेंट होंगे, आप चाहते हो आपकी कीवर्ड की आपको पता होने चाहिए कि आप किस कीवर्ड में सर्च में आना चाहते हो। ठीक है, तो उस टैग्स को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। टैग्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं कोमा से, यूजिंग कोमा। तो मैं यहाँ पे एक टैग देती हूँ, जैसे कि FDP and I used comma, it will become a tag। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी टाइप करे FDP तो मैं ये सर्च में ये वीडियो आनी चाहिए, तो टैग विल हेल्प यू एंड योर यूजर्स टू फाइंड आउट। नेक्स्ट, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, नेक्स्ट करें आप। विजिबिलिटी है, प्राइवेट मैंने रखा है एंड सेव। ओके, ये प्राइवेट में गई है अभी, मैं एक बार चूज करती हूँ इसको पब्लिक, पब्लिश। देखो मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी में डायरेक्ट यहाँ से चूज किया पब्लिक ऑप्शन कि मुझे यहीं से इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो में जहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियोस को यहीं से एडिट कर सकती हूँ। ये मेरा वीडियो चैनल है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकती हूँ, हर एक वीडियो को। जैसे कि मैंने इस वीडियो को एडिट करना है या मुझे किसी और वीडियो को एडिट करना है, एक बार मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। एडिट ऑप्शन पे हम जाएंगे। एडिट ऑप्शन में आपको बिल्कुल लेफ्ट में एडिटर मिलेगा, ये रहा आपका एडिटर। ओके, जब आप एडिटर मोड में आते हैं तो आपकी वीडियो आपने एडिटिंग करने के बाद जब आप सेव करेंगे, इट विल टेक टाइम टू एडिट अ वीडियो। और ये बहुत ही पावरफुल एडिटर है। यहाँ से आप अपनी वीडियो को सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में से ही ट्रिम नहीं कर सकते हैं, आप इसको बीच में से भी कहीं से भी ट्रिम कर सकते हैं। बीच का कोई पार्ट आपको ट्रिम करना है वो आप ट्रिम कर सकते हैं ट्रिम ऑप्शन यूज करके यहाँ से, ठीक है। फाइनल आप एडिटिंग करने के बाद इसको सेव करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका वीडियो यहीं पर अपलोड है, पब्लिश है, उसी कंडीशन में ये ट्रिम भी हो जाएगा। तो ये आप खुद से ट्राई आउट करें। अभी मैं इसको वीडियो को एडिट नहीं कर रही हूँ। इसके साथ मैं आपको बता रही थी कि आई विल डिस्कस सम यूज ऑफ यूजर्स कैसे क्रिएट करें हम, ठीक है। एक बार मैं आपको यूट्यूब चैनल पर ही लेके चलती हूँ एक बार फिर से, योर चैनल। तो यहाँ पे फिर से मैं अपने प्रोफाइल में यहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे एंड यू विल फाइंड सेटिंग ऑप्शन हियर। सेटिंग ऑप्शन में आई विल फाइंड ऑप्शन ऐड और रिमूव मैनेजर्स, चैनल मैनेजर्स। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं मैनेजर्स जो आपके YouTube चैनल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने वीडियोस। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहां से आप चाहते हैं कि आपके टीचर्स सेम अकाउंट पे अपनी वीडियोस अपलोड करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से मैनेजर्स अकाउंट देंगे सभी को। तो यहाँ से आप इन सबको रोल दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं इनको।
एक बार वेरीफाई करवाया है। तो ऐड परमिशंस मैं ऐड मैनेजर परमिशंस पे मैंने फिर से क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पे सुरेंद्र सिंह इज प्राइमरी ओनर। प्राइमरी ओनर विल बी ओनली सिंगल पर्सन, ठीक है। ओनर और मैनेजर, देयर आर 2 अदर रोल्स जो मैं दे सकती हूँ, ओनर एंड मैनेजर्स। ओनर भी एक ही हम पर्सन को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हम मैनेजर्स ऐड कर सकते हैं कितने भी। आई एम द ओनर and Surendra Singh is primary owner of this web YouTube channel, and I have added manager for my YouTube channel here. आप ऐसे ही इनवाइट यहाँ पे ऐड मैनेजर करके, ये देखिए यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, इनवाइट यूजर्स। तो यहाँ से मैं ईमेल आईडी के साथ उनको इनवाइट कर सकती हूँ, तो उनको एक मेल मिलेगी जहाँ से वो एक्सेप्ट करके इसका मैनेजर बन सकते हैं। So, dear participants, that was all about Google account and its services जो हमें इसके साथ मिलती हैं। Gmail is one part, and we have discussed other parts, other services like we have discussed today. Let me show you once again here. हमने डिस्कस किया है ड्राइव, उसके साथ साथ आपको फोटोज भी हैं। आप अपने सारे मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ इनके क्या बेनिफिट रहेंगे। फोटोज में आप अपनी सारी फोन की फोटोज को सिंक कर सकते हैं फोटोज के साथ, और वो ऑटोमेटिकली इस पे आपकी अपलोड होती जाएंगी। इन केस आपके फोन को कोई डैमेज हो गया, कुछ भी आपका चोरी हो गया या डैमेज हो गया, तो भी आपके फोटोज में आपको सारी आपकी फाइल्स फोटोज मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, कैमरा की, व्हाट्सएप की। आप चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी आप फोल्डर इसमें सिंक करना चाहते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ एक कीप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, इसके बारे में भी सिर्फ बताऊंगी कि कीप आपको फैसिलिटी देता है आपको एक अपनी नोट्स क्रिएट करने की, और वो आपके एक डायरी की तरह काम करेगा। डायरी में जैसे कि हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क लिखते हैं कि आज मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये वाली पेमेंट्स करनी है, या मैं अपनी पासवर्ड्स लिख सकती हूँ, बहुत सारे पासवर्ड अगर मैं मैनेज कर रही हूँ, ईमेल आईडी, कुछ भी है, एक डायरी का काम करेगा आपके लिए कीप। कीप में आप मोबाइल ऐप रहेगी जो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस फाइल में आप फोन से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो कंप्यूटर पे भी सेम लॉगिन से आप अपनी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके कहीं पे भी कीप को आप शेयर भी कर सकते हैं। अपने बनाए हुए आपने कोई लिस्ट बनाई, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी ग्रोसरी है या कोई भी मुझे शॉपिंग लिस्ट है शेयर करना है, तो मैं कीप पे बनाती हूँ, एंड आई शेयर विद माय हस्बैंड, एंड वी हैव द सेम लिस्ट ऑफ आइटम्स, जहाँ से मैं टिक और अनटिक कर सकती हूँ। मैं कैन देख सकती हूँ कि आई हैव विच थिंग्स आई हैव परचेज्ड, विच टास्क आई हैव कंप्लीटेड, विच आर अदर थिंग्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यूजफुल सर्विस है गूगल की जो आप यूज कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Hello. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot for this wonderful deliberation. Thank you so much, Rani ma'am. Thank you. So you and your team has put their best in making all of us understand these Moodle learning-based management system, ma'am. So on the behalf of all the participants and FDP team, I thank you. So, Honorable Chief Minister will be joining us shortly. I request you and Surendra sir also to be here only. And dear, sure. Yes. So dear participants, so there is an announcement for you that after our valedictory session, you all are requested to be here only. Remain in this meeting only. Our Honorable Vice Chancellor wants to talk to you after this session. So sir has already joined us,
and our Honorable Chief Minister will join us within few minutes. This session had been very informative and useful for all of us, and but I believe that all the participants must have created their own website. Even I have created mine, Bharti Rawat at Moodle Cloud, and one on Xenomio. So, ma'am, thanks a lot. The credit, all credit goes to you and your team. So, hopefully, when we as an प्लीज वेट भारती मैम, Yes. भारती मैम एक्चुअली सीएम हाउस से एक बार जो टेक्नीशियन टीम है वो ऑडियो को वीडियो को चेक करना चाहती है। Sure, sir. सॉरी फॉर प्रधान सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ सर, आरी होल्ड ऑन अपनी आपका ट्रेस पे रखो। लाइव भी ये करना जाएगा। हाँ सुशांत सर, बिल्कुल क्लियर है ऑडियो वीडियो। सर ऑडियो बिल्कुल क्लियर है सर। और व्यू सर? व्यू भी बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके सर। होल्ड ऑन प्लीज। मैं फ्री होके बताता हूँ, ठीक है? 3 से 4 तक। Meera ma'am. Yes, yes. Unmute our Honorable Chief Minister's screen. Okay, okay. हाँ सर आप सर एक्चुअली में आप Sushant, please unmute. Sushant. Ma'am, you have made someone else as a host. Please reclaim the host. Okay, okay. And make Sushant sir as host. I'm doing. Yes. Sushant, please unmute. हाँ सर अब मैंने अनम्यूट कराया आपको, एक बार अब अनम्यूट करिए आप। हाँ हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। आ रही सर आवाज? सर बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। बस 5 मिनट में अनम्यूट ही रखना सर। ठीक है सर बिल्कुल। So hopefully all technical settings have been done. The stage is all set. So very soon our Honorable Chief Minister will join us in this session. We are grateful to him that he agreed and gleefully accepted our invitation. And as we were discussing, this workshop would have not been possible without the continuous support of Poonam ma'am and Surendra sir. So thank you for for your continuous support, ma'am and sir. Thank you. During these 7 days, FDP, we all have learned about MOOCs and Moodles, how we can create quality videos, audio lectures, and then how we can run a complete course. सर मैं ये कह रहा था कि आप एक बार अपन आपको म्यूट कर देंगे तो अनम्यूट मेरे एंड से ही होगा सर। ये थोड़ा सा ध्यान। This would have been a great learning experience for all of us. हाँ जी सर अनम्यूट कर दीजिए। I hope
all the participants must have enjoyed and learned a lot हाँ जी बस during the हाँ जी session. बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर हाँ जी The journey is about to end, or rather, I would say, a new journey of all learners will begin now. We can more perfectly handle our online teaching by applying these softwares, tools, and LMS. Moodle-based learning management system we have learned. Similarly, the other learning management system, even Swayam is also a learning management system, which is offered by our ministry and managed by Government of India. So although this would have been a very big platform, endless number of courses are offered. But as we want to develop a course, then how we can develop a course, and afterwards how can we run a course from a learning management system that can be learned. That we have learned. Now I think we all are well versed. Hello, mic testing. Hello, mic testing. Okay. हेलो सर Audio is okay. ओके सर Okay. बिल्कुल ठीक है सर. ठीक है, सीएम साहब पहुंच रहे हैं बस. So, our honorable registrar of Indira Gandhi University, Dr. Annapurna Sharma, has also joined us. So, thank you, ma'am, for joining us. Thank you, Bharti. Thank you. Participants, we are just waiting for our honorable Chief Minister to join. So, as soon as he will join, we will start our valedictory function. And please be here, keep connected with us even after this valedictory session, as our honorable Vice Chancellor sir wants to interact with the participants. And afterwards only we'll be giving you information about feedback forms and your certification process. So as I was saying that during this 7 days journey, we have learned about MOOCs, MOOC creation and the management of MOOCs by using these learning management system like Moodle. So now if we are going to run or say make a course for MOOCs, now we know how to administer it, how to start a course, how to enroll the students, how to run a course, how to evaluate the students, how to get their assessment, and each and everything. And that had been beautifully conveyed by Mr. Surendra and Ms. Poonam Panchal. Although even after this workshop, you may write to them, you may write to us, and we will try to give our best and try to resolve your queries, if any. And request the participants to suggest something, how can we improve further if we have to rerun, what suggestions they would like to give. Seek their suggestions after this valedictory session is over. Sure, sir, sure. So as our Honorable Vice Chancellor sir has said that we will be seeking your suggestions after the valedictory session. So I request you all to think about that and what can be the ways of improvement, and that will be beneficial for us as well. As sorry, we are also doing it for the very first time. Ma'am, one information, CM sir will be joining us in few minutes. Okay, sir.
So dear participants, our Honorable Chief Minister of Haryana is going to join us in few minutes, and we will commence our valedictory session afterwards. I request you all to keep your audios and videos mute. We hope the participant will, when they go back to their respective places, they organize their workshop to make their colleagues to learn Moodle-based learning teaching management system. Then it will be we say, okay, this workshop is successful if they are able to transmit further to their colleagues, to their students. And we will love to know and get their feedback, how much they have really went back to their places and again organize such workshop. And they should be the resource persons themselves. I think he is joining us. Okay, sir. Okay. Thank you. Sushant sir. Yes, ma'am. Unmute Chief Minister. Yes, ma'am. Chief Minister sir window. Unmute. Unmute him, please. किनको अनम्यूट करना है मैम? Chief Minister. Yes, ma'am. Actually, they are muted themselves. Okay, you please unmute them, I think. Ma'am, they are muted themselves, and when they will communicate. Okay, they will communicate. Yes, sir. Okay. I will. So it is a matter of great privilege for Indira Gandhi University as well that back to back we had completed our 2 7-day programs, one after another. One workshop we had conducted and on research, and afterwards this faculty development program. And what I believe this was the need of the hour. We all are talking about online teaching, online learning, but how to do it? So that was more important, and we had tried to deliberate on the same, that what are the tools, softwares, free software. Ma'am, CM sir आ चुके हैं. Okay, sir. So this was a great learning experience for all of us. Sir, CM sir unmuted. CM sir unmuted. Yes, sir. He is unmuted. Namaskar, sir. नमस्कार जी नमस्कार सर. इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। श्रीमान, आपने अपनी व्यस्ततम समय सारणी में से हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, अचानक से ही एक वैश्विक महामारी ने हम सभी को घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बिना किसी तैयारी के ही अचानक से बंद करने पड़े। ऐसे में जब हम सभी शिक्षकगण ऑनलाइन टीचिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तब यह नितांत आवश्यक हो गया कि हम सभी ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित साधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और इस ज्ञान को औरों के साथ भी साझा करें। इसी उद्देश्य के साथ हमारे कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार मैम ने मूक और मूडल से संबंधित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने का प्रस्ताव पारित किया। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कैसे अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कैसे विद्यार्थियों की कक्षाएं ले सके, कैसे उनसे स्टडी मटेरियल साझा करें
और उनका मूल्यांकन कैसे करें, यह सब इस एफडीपी में विस्तार पूर्वक बताया गया। ऑनलाइन शिक्षा के लिए उपलब्ध भारत सरकार के ईपीजी पाठशाला और स्वयं पोर्टल तथा इसी प्रकार के अन्य ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर एस.के. गखड़ जी को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने मुखारविंद से हमारे मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय जी। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य, देश के कोने कोने से जुड़े मेरे साथी अध्यापकगण, आप सबको मेरा नमन, स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मैं अपनी ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यशाला मूक्स तथा मूडल बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने व्यस्त दिनचर्या से अपना समय दिया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति से सृजित एक नई ऊर्जा के संचार से हम सभी प्रेरित और उत्साहित हो रहे हैं। कोरोना के संकट के दौर में शैक्षणिक संस्थाओं के आगे एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ एंगेज रहना समय की जरूरत थी और है भी। शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विश्वविद्यालय को मैं भ्रूण अवस्था में तो नहीं कहूंगा, पर यह बाल्य अवस्था में तो अवश्य है ही। इस विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी के बावजूद यहाँ के अध्यापकों ने अपना पाठ्यक्रम ऑनलाइन पूरा करवाया। इसके लिए मैं यहाँ के अध्यापकों को बधाई देता हूँ। शिक्षकों को ऐसे कठिन समय में अपने दायित्व निर्वाह करने के लिए, उन्हें अपने आप को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए तैयार करना है। इसलिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए अध्यापकों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए इस मूडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की कार्यशाला का आयोजन किया। मूडल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के प्रोग्रामर द्वारा यह विकसित किया गया है। यह किसी देश का नहीं है, यह किसी कंपनी का नहीं है। यह एक शिक्षक और छात्र को विभिन्न मूल्यांकनों की विधि के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा देने के तरीकों को सिखाने का मार्गदर्शन करता है। मूडल को आईजीयू के लिए कॉन्फ़िगर करना, इसे हमने अपने स्वरूप के ढालना, यह हमारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए छोटा परंतु पहला कदम है। अब सभी छात्रों और पाठ्यक्रमों के संबंधित डाटा हमारे सर्वर पर रहेंगे। अब हम अपने पाठ्यक्रमों में असीमित छात्रों को दाखिला दे सकते हैं और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूरस्थ शिक्षा भी देने की सुविधा दे सकते हैं। हमने इसे अपनी आवश्यकता अनुसार कॉन्फ़िगर किया है। हम इसे अपनी उंगलियों और माउस के साथ सूत्र लिखने के लिए गणित और वैज्ञानिक के समीकरण के साथ हमने इसको जोड़ा है। और इसके अतिरिक्त कई सारे फीचर्स जैसे अटेंडेंस, फ्रेंडली यूजर इंटरफेस और बहुत कुछ इसमें नए नए फीचर हमने शामिल किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा विश्वविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कभी भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में भी पीछे नहीं रहा। जहाँ एक तरफ विद्यार्थियों को तनावपूर्ण रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पहले लॉकडाउन अवधि के दौरान ही एक विवेचना नाम के पोर्टल शुरू किया, जहाँ विद्यार्थी अध्यापकों से बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय ने अपना एक कोविड रिलीफ फंड का पोर्टल भी स्थापित किया, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स जैसे हमारी फर्म्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, उन सब ने योगदान दिया। इस अतिरिक्त कोष में लगभग 2,17,000 रुपए जो एकत्रित हो चुके हैं, इनको आज ही हम मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवाने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे इस फैकल्टी विकास कार्यक्रम में देश भर से 428 अध्यापक भाग ले रहे हैं
जिसमें से 94 शिक्षक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से हैं, जबकि 334 लोग विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से हैं। लगभग आधे लोग हरियाणा से बाहर के हैं। प्रतिभागी पूर्वोत्तर भारत से तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से हैं। इस प्रकार देश के कोने कोनों से लोग इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। मुझे आज इस मंच से यह घोषणा करते हुए भी अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में मिलने वाली संपूर्ण राशि भी हम हरियाणा मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में योगदान करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक स्टाफ, आउटसोर्सिंग स्टाफ और सभी सदस्यों ने अपने एक दिन का वेतन जो पिछले कई महीनों से दे रहे हैं, लगभग हम 6,35,000 रुपये योगदान दे चुके हैं। इस कार्यशाला की शुरुआत माननीय श्री अतुल जी कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के व्याख्यान से शुरू हुई। इन 7 दिनों में तकनीकी विशेषज्ञों ने सफल प्रशिक्षण देने का हमें फीडबैक मिला है। मैं चाहता हूं कि इस देश का हर अध्यापक इस ऑनलाइन टीचिंग करने में इतना सक्षम हो जाए कि उनको यह चुनौती ना लगे, अपितु अवसर लगे और हर अध्यापक देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। अब मुझे अल्लामा इकबाल की 2 लाइनें याद आ गई, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हम तकदीर से पहले खुदा बंदे खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। और मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। मुख्यमंत्री जी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति प्रोफेसर S.K. गखड़ जी, अन्य विद्वतगण, शिक्षकगण, वे प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोविड-19 एक महामारी का समय आया और कोविड-19 के आने के बाद हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या सब कुछ एकदम बदल गया। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, घर से आना जाना बंद, स्टे एट होम, ये सब बातें समाज के हर वर्ग को उसको एक प्रकार से उसका पालन करना पड़ा। उसमें विद्यार्थी भी, शिक्षकगण भी उसी का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ सभी विश्वविद्यालयों ने, सभी महाविद्यालयों ने अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, ये सब ऑनलाइन करके अपने सिस्टम को शुरू किया। सरकारों ने भी इसमें, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा थी, चाहे वो सेकेंडरी शिक्षा है या महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयों की सब बच्चों की शिक्षा, इसका एक ऑनलाइन सिस्टम कैसे शुरू किया जाए, इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। आज मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की ओर से ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 7 दिन का शुरू किया जा रहा है, उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं इसके लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की टीम को, वाइस चांसलर को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम की उन्होंने शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण देने का ये जो कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हुआ, ये और इस वेबिनार के बाद अच्छे प्रकार से शुरू होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षण सामग्री को शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन निर्माण और प्रबंधन के ज्ञान से परिपूर्ण करने की दिशा में ये एक प्रयास है। 7 दिन तक निर्धारित मूक्स और मूडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फैकल्टी विकास ये कार्यक्रम है। इसमें विशेषज्ञ ऑनलाइन शिक्षण के लिए सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स, IT टूल्स, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे और हमें इसका परिपूर्ण एक लाभ इसमें होगा। बैठकों और कक्षाओं के संचालन के लिए मूक्स विकास और मॉडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षण सीखने के लिए प्रक्रिया में शिक्षकों को बहुत सहायक होगा। मुझे याद है UGC के अंतर्गत
लगभग 4000 ऐसे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उनके लेक्चर्स की एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है और ये सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उसका उपयोग मैं समझता हूं आप लोग कर सकेंगे। ये एफडी ऑनलाइन शिक्षण ई सामग्री निर्माण और ई सामग्री के ऑनलाइन वितरण दोनों पहलुओं के विकास के लिए ये काम करेगा। विशेषज्ञ गुणवत्ता वाले ऑडियो व्याख्यान सामग्री विकास के लिए खुले स्रोत यानी ओपन सोर्सेज के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, विभिन्न सामाजिक मीडियम प्लेटफॉर्मों के आवेदन और शिक्षण और सीखने के लिए खुले स्रोत यानी ओपन सोर्सेज, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकेंगे। एफडीपी शिक्षकों को अधिक सक्षम बनाने और ई लर्निंग प्लेटफॉर्मों से परिचित होने की दिशा में एक ये प्रयास है। दुनिया कोरोना वायरस से जनित या भूतपूर्व समय और आपातकालीन स्थिति को देख रही है। अनिश्चित भविष्य के लिए शिक्षाविदों, राष्ट्र बिल्डरों को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ये विश्वविद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है। मित्रों, शिक्षक उसकी अपनी एक भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका के नाते से अभी तक हम एक शिक्षण का प्रकार जो कर रहे थे उसमें ये बदल, अब इसमें हमको भी एक अनिश्चितता के माहौल को एक निश्चित कार्यक्रम के माध्यम से अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, इसकी हमको तैयारी करनी होगी। शिक्षक पढ़ाई कराता है, एजुकेशन कराता है। शिक्षण यानी एक प्रकार का एक पाठ्यक्रम के अनुसार करना एक सामान्य पद्धति है, लेकिन मैं अपने सब शिक्षक बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि शिक्षा केवल 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, बल्कि शिक्षा में सद्गुणों का प्रचार, संस्कार, ये पद्धति भी जरूर विकसित करनी चाहिए ताकि हम अपने नागरिक को एक अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा ये दे सकें, रोजगार परक शिक्षा ये दे सकें, ताकि शिक्षा केवल वो डिग्री फॉर डेकोरेशन लेकर के घर में ना बैठ जाए, बल्कि उसके शिक्षण के बाद उसको कुछ योग्यता ऐसी हासिल हो कि अपने जीवन यापन को ठीक से वो आगे बढ़ा सके, प्रदेश और देश के निर्माण में वो सहयोगी बन सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, उस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही ये है कि हम हर नागरिक को आह्वान करें कि वो इस देश के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभा सकता है वो अवश्य निभाए। तो इसलिए उस भूमिका को निभाने के लिए हमारी भूमिका ये बनती है कि हम अच्छे नागरिक तैयार करें जो देशभक्ति से परिपूर्ण हो, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास माने, इस देश के उत्थान को अपना उत्थान माने, इस देश के भविष्य को अपना भविष्य माने। देश यदि आगे बढ़ता है तो सारा समाज आगे बढ़ता है। इस नाते से भूमिका को लेकर के हम आगे बढ़े और आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमारा विद्यार्थी जितना ज्यादा वो तज्ञ बनेगा, जितना ज्यादा परिपक्व होगा, जितना ज्यादा संस्कारित होगा, उतना ही काम हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार के नाते से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में एक अनिश्चितता का दौर है। मालूम नहीं ये कोरोना की बीमारी कब तक कैसी चलती है। हालांकि इस कोरोना के समय में भी हमने सरकार की ओर से बहुत से ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं। शिक्षा के तो चलाए ही गए हैं, शिक्षा के साथ साथ जो सरकारी सेवाएं हैं उनको भी जनता तक उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम उनमें चालू किए। हमने व्यक्ति जो खास करके गरीब व्यक्ति हैं जिनका रोजगार चला गया, उनको रोजगार की आवश्यकता के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाए। उसमें कुछ मजदूर ऐसे थे जो अपना मजदूरी यानी करने की बजाय उनकी इच्छा घर जाने की हुई, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको घर भिजवाने की व्यवस्था की। जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, 16 लाख परिवारों को हमने ऑनलाइन सिस्टम से उनकी आवश्यकता के हिसाब से 3000 रुपया से लेकर के और 5000 रुपया मासिक तक उनको आर्थिक सहायता भेजी। जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता थी उसमें भोजन वितरण का भी काम हमने किया। हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स प्रतिदिन उसमें हजारों कॉल जो आती थी, उस कॉल के माध्यम से पूरे हरियाणा में जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसको हम पूरा करते थे। राशन की जिनको आवश्यकता थी ऐसे राशन भेजने की हमने व्यवस्था की। कार्ड नहीं भी बने हुए थे उनके, बहुत लोग ऐसे थे जिनका जो राशन कार्ड है वो नहीं बना हुआ था, ऐसे लोगों को राशन मिलना दूभर था। ऑनलाइन हमने अप्लाई करा करके उनके भी डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने उनको दिलाए। मेरा कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सारी चीज रुक गई है, थम गई है। रुकी थमी नहीं है,
नई व्यवस्थाओं का तकनीक के कारण से इजाद करना, उनकी इन्वेंशन करना, ये हमारा काम होता है। हम तो जो कि विश्वविद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, ये इन विषयों में बहुत भूमिका निभा सकते हैं। हर समस्या के निदान के लिए नई नई रिसर्च हम कर सकते हैं। तो इन नई रिसर्च के माध्यम से हम सामाजिक चीजों को, समस्याओं को हल करने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं, इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। आज तो समय इतना ही है कि अगले 7 दिन में हम अपना ऑनलाइन शिक्षण पद्धति इसको कैसे मजबूत करें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य ये ना बिगड़े, उनका वर्ष खराब ना हो। अभी तो इस बार की परीक्षाएं ये भी शेष है कॉलेज विद्यार्थियों की। पिछले दिनों में हमने एक वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग करके ये कहा था, सबका एक निर्णय हुआ था, सामूहिक निर्णय, कि हम जो परीक्षाएं हैं जुलाई के महीने में कुछ विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेंगे। और मुझे उन विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों से आपके माध्यम से ये भी कहना है कि समय के हिसाब से इन सब चीजों का पालन करने के लिए हमको कोई भी अदल बदल करना हो, लेकिन विद्यार्थी का हित ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी की पढ़ाई, विद्यार्थी की परीक्षा और उसमें अगली क्लासों में कैसे उनका एडमिशन हो, इन सब बातों को जरूर ध्यान करें। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं आज का ये वेबिनार के माध्यम से जो कार्यक्रम एफडीपी शुरू कर रहे हैं, इसका शुभारंभ करने का, इसको श्री गणेश करने का, और मैं एक प्रकार से इसका शुभारंभ करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। जैसा कि आपने कहा, इस एफडीपी के माध्यम से हमने राष्ट्र निर्माताओं, शिक्षकविदों को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश की है, जो कि आगे जाकर अपने विद्यार्थी और साथी शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं धन्यवाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करती हूँ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा जी को। अन्नपूर्णा जी बेटे को साथ लाइए। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार। हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पर आए। आपने एकदम सही कहा, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, समकालीन समय के संदर्भ में वो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सब कुछ अपरंपरागत हो गया है, अपरंपरागत युद्ध हो गए हैं, अनकन्वेंशनल इसे हम कहते हैं, अनकन्वेंशनल एनिमीज हो गए हैं। पहले तो सामने दिखता था कि एनिमी आ रहा है, आप उस पर हथियार डालिए, मारिए। अब सब कुछ एकदम अनकन्वेंशनल है। कभी कल्पना नहीं की थी कि बाहर जाएंगे और एकदम मास्क पहनना एक कंपल्शन हो जाएगा। अब तो औरतों को उनके कपड़े के साथ साथ उनके मास्क की भी के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है कि अरे बहुत सुंदर मास्क पहना है आपने। तो अब इस समय में, जब आज के संदर्भ में, तो इस एफडीपी के द्वारा ये इसका ऑब्जेक्टिव यही था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ केवल 2 लाइनों में। The objective of this faculty development program is to equip our teachers as well as our young and old learners with unconventional method of teaching and learning. ये एक unconventional method है। इसके माध्यम से हम एक इनिशिएटिव है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि आज के चैलेंजिंग टाइम्स में, जैसे आपने कहा कि कुछ भी रुका नहीं, तो ये एक उद्देश्य है कि कुछ भी रुके नहीं, सब कुछ चलता रहे, स्पेशली शिक्षा चलती रहे। तो यही इसका उद्देश्य है। और मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आपने समय निकाला और आप यहाँ पर आए। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे वाइस चांसलर साहब का। उनका भी एक अनकन्वेंशनल अनडाइंग स्पिरिट है। कितना भी चैलेंजिंग समय है, मैं मानती हूँ। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हिम। ये एक 7 डे प्रोग्राम हमारा है यूनिवर्सिटी का, और इतना रेलेवेंट है। आज के समय में इससे रेलेवेंट कुछ भी नहीं है। हम सीधी सी बात है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इसकी समस्या है। आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। उससे पहले टीचर्स को आप किस चीज के लिए इक्विप कर रहे हैं। तो एक क्वालिफिकेशन है टीचर्स के लिए कि वो इस चीज को लर्न करें। तो इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा उन्हीं को इक्विप किया जा रहा है। 428
शिक्षक जो हमसे जुड़े इस एफडीपी के द्वारा, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे प्रतिभागियों, इंदिरा गांधी परिवार की तरफ से और एफडीपी टीम की तरफ से मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमसे जुड़े और उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। गखड़ जी, हमारी शुभकामनाएं। बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। So with this, I thank all the participants, our Honorable Vice Chancellor, our Registrar Ma'am, and all the faculty members, deans of the faculties, professors of the universities, chairpersons, heads, and all other people who had joined us in this valedictory session. Thank you one and all. So now, as asked by sir, I am opening this session for suggestions, improvements, and feedbacks from our participants. So participants, one by one, you can unmute the person who wants to say something. Sure. और दूसरा, जो एक सजेशन किसी का आ जाए तो दूसरे के पास भी वही सजेशन हो तो रिपीट ना करें प्लीज। So participants, I request you to raise your hands that if you want to say something about this FDP, if you have any kind of suggestions for our improvement. Yes, we have Mahesh ji with us. So I request Sushant sir to unmute Mahesh ji. Yes, he's unmuted. Mahesh ji, please. Hello, madam. Namaskar, sir. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Please. हाँ, बहुत ही अच्छा रहा ये एफडीपी, बहुत ही सीखने को मिला। महेश जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा बता देंगे। मैं डॉक्टर महेश प्रभाकर राव कुलथे, असिस्टेंट प्रोफेसर वसंतराव नाईक महाविद्यालय औरंगाबाद। ओके, हाँ। तो बहुत ही बढ़िया रहा ये एफडीपी, और जो मैडम ने और सर ने जो सिखाया हमको ऑनलाइन कैसा टीचिंग करना है, अलग अलग टेक्निक सिखाए, बहुत ही सॉफ्टवेयर भी मूडल बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो ये जो 7 दिन का जो समय था बहुत ही अच्छा गया। मुझे एक सजेशन देना है, ये जो ऑनलाइन आप सिखा रहे थे तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, तो अगर प्री रिकॉर्डेड वीडियो अगर यूज करे तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा, वो अच्छा रहेगा। Yes. इसमें what we can do is next time if we organize, we transmit the pre-recorded some videos so that you come prepared and then can have discussions and things will be more clear then. हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में क्या बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। This is where technology disturbances are there. ठीक है, ओके। Yes, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, Mahesh ji. Thank you, Now we have Professor Jay Prakash ji with us. Jay Prakash sir, please allow to unmute yourself. So I request the participants who raise their hands to please allow us to unmute themselves. Yes, yes, Jay Prakash ji, you are audible. Hello. Yes, sir, Dr. Jay Prakash. हेलो। Yes, sir, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर, आप बोलिए। Is my voice audible? Yes sir, yes sir. नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश। पहले तो मैं सबसे पहले वाइस चांसलर सर को धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहे। मैं again congratulate to all the participants and all the family members of the Indira Gandhi University. Yes. Thank you. Sir, namaskar. Namaskar. Namaskar, sir.
I think Dr. Jayaprakash ji के यहाँ कुछ network issues हैं, as it is shown on my screen. So may I invite the next participant, Manorma, and Sushant sir, I request you to lower down the hands who have given their feedback. Yes, Manorama. Yeah. Good afternoon, one and all present over here. Thank you, Bharti ma'am, for giving me opportunity to share my experience. And first of all, I will thank you all the organizers and VC sir for organizing such a knowledgeful FDP program. Although I am a research scholar, but it is very useful for the research scholars also as well as teachers also. The workshop is awesome and very insightful for us, as I have learned a lot of things about how we can use technology in teaching process. As we know, due to pandemic COVID-19, all the education system is online now. So how can we use different technology, different platforms to teach the students? And I think Moodle is very useful for us, because we can create our course, we can run our course on Moodle sites, different Moodle sites, and we can also assess the students. We can also track their process also, and we can also restrict them not to cheat in the exam, not to cheat in the test also. So it is very useful for us if we use it. And I especially thank to Poonam ma'am and Surendra sir. They all they all elaborate this concept very easily. And the most important thing कि हमने इसे सिर्फ सीखा नहीं है, हमने इसे साथ में किया भी है. And I'm very much excited to use this in our next session as I get any class. Thank Which you. organization you belong to? Sir, I'm research scholar from Indira Gandhi. IGU, sir. IGO, Department of Commerce scholar. Commerce. Yes, So, sir. but Manorma, definitely you are going to help us out very Yes, soon. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So thank you, Beta. So Thank can we have next? S. Satyam sir is there. Yes, ma'am. I'm audible? Yes, sir, you are audible. Sir, namaskar. Give a brief introduction of yourself to sir, and then Okay. Okay. My name is Satyam, lecturer in computer science and applications, Government Degree College for Women's, Jagityal, Telangana State. Oh. So, teaching of the teachers is not a easy task, sir, but IGU family wonderfully organized the FDP. I say thank you one and all to FDP family of IGU. My small suggestion from my side, sir, when I observe these 7 days, some of participants are not behaving a proper manner in the FDP. मैं आपको फिर करता हूँ एक बार इससे फ्री हो. Yes. Sir? Yes, Yes. sir. Yes, sir. You may continue, please. A small suggestion from my side, sir. So many participants have the online FDP is completely different from offline FDP. So some mannerism must be maintained from participant side. So if in the first session there are 10 or 20 minutes, the suggestions given by the FDP team, it will be more why, because so many are attending at present. This is the first online FDP in the participants list. So that is the a small suggestion from my side, sir. But Yes, very important. wonderful 7 days program, sir. Thank you, one and all. Thank So thank you, Mr. Satyam. Sir, can we more people, although like it's a long queue now. VC sir, if you Very permit. quick, one line, name and organization, and let me have, if suggestion is there, then let's have suggestion.
Okay, okay. So please, as you have listened, your name, your affiliation, and then a very quick suggestion so that we can take more and more participants. So Sushant sir, can we have Mr. Kavi Grover with us? Ma'am, Dr. Dinesh Kumar Gupta is there. Okay, yes, Dinesh ji, please. Dinesh हाँ sir. जी मैम, नमस्ते मैम. Namaskar sir. Am I audible मैम? Yes sir, जी. you are audible. ओके, थैंक यू मैम. सर्वप्रथम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय कुलपति जी और एफडीपी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया था, प्रोफार्मा टॉपिंग का बनाया था कि इसको किस तरीके से क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, वो टाइम टू टाइम चला और टॉपिक वाइज चला. और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है. और टीम में चाहे ईश्वर सर हो, भारती मैडम हो, सुशांत जी हो, और स्पेशली पूनम पांचाल मैडम और सुरेंद्र सर, सभी लोगों ने बीच बीच में जहां जैसी जरूरत थी, चाहे एफडीपी ग्रुप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, उन्होंने लगातार गाइड किया. और मैं कमियां तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि कार्यक्रम है. इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं हम आईजीओ के फैमिली मेंबर की तरह फील करने लगे हैं, इसलिए मैं कमियां नहीं बता सकता हूं. थैंक यू मैडम, थैंक यू आईजीओ. लिख के बता दे, भेज देना. ओके सर, थैंक यू. That will help us improve next time. Okay, Thank you. Yes, okay, sir. thank you sir. Feedback form में ये option है. You all can give your suggestions there. So Kavi Grover sir. Hello. Yes sir, you are audible. Please continue. Is this audible? Yes sir, yes sir. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Good afternoon Vice Chancellor Gakhar sir. Firstly, I congratulations to Gakhar sir that he is having such a beautiful and such a nice and energetic team for this FDP, and all the members who gave us different kind of thoughts regarding their websites, whether it is Genomio or Costat and Drive, whatever it is. It was very nice. Sir, Gakhar sir, I belongs to Raffles University. It is Nimrana, and I am a assistant professor in mechanical engineering department. So, sir, thank you very much for generating such a nice session for us. But initially, I was very in doubt कि इसमें कितना पढ़ाएंगे, कितना बताएंगे, because Moodle is a very अभी तक इतना craze भी नहीं था. But when I started day by day and I used to do it, I found lot many options in Costat as well as Genomio, whatever it is. बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम घर बैठे भी टीचिंग करें तो इट इज वेरी नाइस फॉर अस. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you Kavi sir. Sushant sir, can we have Professor Romika Batra? She also wants to say something. Just to participants, she is our own professor, Professor Romika Batra from Department of English. Romika ma'am, please. Sure ma'am. Romika ma'am, please allow to unmute yourself. Am I audible now? Yes ma'am, yes ma'am. Be bit louder ma'am. Yeah, sure. First of all, I would like to congratulate and thank also the whole FDP team, along with, first of all, at the top of it, I would like to congratulate Professor Gakhar, our Honorable Vice Chancellor, for conceptualizing and, substantializing it. And it will definitely prove to be quite advantageous and fruitful for all the teachers. I mean, because we belong to the previous clan, the older clan. So the program was actually very helpful for the people like us who are not very. You should thank Dr. Tej Singh. He belongs to your clan and he did it. Yeah, and yes, sir, definitely. So I have a little suggestion to make here. There is a thing like reverse mentoring. So I would like that the young teachers of IGU as well as the technical staff, Dr. Poonam Panchal and Surinder ji, they should be engaged in the future for the reverse mentoring. I mean, they can mentor or they can illuminate the
the older staff, and this process should continue because it was the first time. It needs a follow-up also. Thank you. Thank you, sir. There to assist you, not an issue. We are always there at your disposal. So can we have Mr. Sunil with us? Sushant sir? Yes, yes. Hello. Hello. Sir, you Am are I audible. audible? Yes, sir, you are audible. Sir, I am Dr. Sunil Kumar, Assistant Professor, Institute of Pharmaceutical Sciences, Kurukshetra University, Kurukshetra. Oh. I, on behalf of all participants, thanks Honorable Vice Chancellor, Registrar Madam, under their dynamic leadership and cooperations, this FDP was well organized by the organizing committee. Further, I extend my thanks and congratulate to on behalf of all participants to organizing team. What was the beauty of this course? The beauty of this course FDP was that it include both the relevant sessions, lecture sessions, and workshop and live demonstrations. By the workshop on Moodle, Mr. Surender and Mrs. Poonam made well aware us on Moodle LMS. We are also thankful the FDP well organized, the organizing team well handled the queries of each participant. My suggestions on this, some suggestions. Some workshops should also be done on evaluations of online exams. I have some experience that during internal assessment, we use Google assessment forms. And we know the students are more smarter than us. We gave them option, correct answers, option, point value. They see the correct, they attempt first and see what are the wrong, what are the correct, and they copy each other. Then some students also double login, false login, and by that they saw the score, and then again correct login, and by correct login they submit their scores. So I think that workshops should also be done on online exams. Next field FDP, area. next FDP will be on online evaluation and exams. Thank you, sir. That Thank is you. in the mind. We are working. We are searching for those some That resource is my persons. experience on Google assessment form. Yes. And I see the students are more smarter than us. They are one Yes. step ahead us. Okay, thank you, sir. आरती एक दो और ले लो बस. Hello, am I audible? Yes, yes, ma'am. Am I audible? एक दो और ले लो Yes, बस. yes, sir. Yes, sir. You are. Yes, ma'am. You are audible. I'm not getting your voice. You continue Okay, with okay, that. okay, okay, I'm not okay, getting your okay. voice. Okay, okay, okay. Sir, we have Ramandeep Kaur. एक और लेना बस. Yes, yes, sir. We cannot unable to connect. Jaipal sir. Yes, Jaipal sir. Yes, sir. Yeah, yeah. Good afternoon, Honorable Vice Chancellor, sir, and all participants. It was wonderful experience, and I will say it was the best utilization of our this summer vacations. So thanks to all organizers, and congratulations to all participants. We learn a lot of from this faculty development program. Thank you very much, all of you. Thank you, sir. Sir, sir, am I audible? Yeah. Yeah. Yes, sir. So, dear participants, thank you very much. Thank you, all of you, for your kind support and your kind appreciation. I have received lot of message in my chat box that this workshop is very useful and very fruitful for the all participants. I personally thankful to Honorable Vice Chancellor Sir, Worthy Registrar Ma'am, and all team of this faculty development program. Thank you, all of you. Have a nice day.
Thank you. Should we conclude, sir? Yes.